ये look ये ऊपर है सेकंड फ्लोर अच्छा कोई बात सेकंड फ्लोर बोल तो रहे हो सेकंड फ्लोर ओके एलिम को करेंगे second floor Yeah. Let me show you where it is. इधर उधर जी सर उधर बीच में चलनी पड़ेगी उनको बोलते मैडम कौन आ रहा है क्या लग रहा है ठीक ठाक जगह ले लें जैसे कि अपना ही अपना देता ठीक है ना जीएम YouTube. You got the Shark Tank. Are you with Rahul? The second floor. तो आ जाओ सेकंड फ्लोर पे इन फ्लोर पे हाँ तो उसी ने फटाफट मेल आईडी हाँ यहीं बैठ के मैं लिखा दिया है मैं नहीं जा रहा मैं यहीं बैठ जाऊँ कहते रहे मैं कॉपी कर दूंगा बड़ा है ना ये नेम निकाल रहा है मैम बस सेक्रेटरी सर आ गए कोई जगह नहीं हमारी मतलब लगाने हैं सर आप यहाँ जाइए सर जी सर हम लोग उधर शिफ्ट हैं समझा वहीं बैठे सर कोई करते हैं प्लीज प्लीज पढ़ लो बढ़िया पर वो एक दो मिस नहीं है राजेश जी है कि नहीं है इसमें रह गए वो आ रहे हैं नहीं है सर नहीं है सर शायद सर नहीं है हटा दीजिए तो जाओ वो उसको बुलाओ बाहर से अपने बिठा रहे Once I'm happy to be together here. First time. हाँ ठीक नहीं सर यहाँ से मना करा उन लोगों ने अगर आपके प्रिंट नहीं सुहाना सेकंड फ्लोर कितनी बार बताऊँ यार सेकंड फ्लोर हाँ दूसरी मंजिल पे सेकंड फ्लोर उधर चालू कर दो ना तो हम कर लें ये मुझे पता नहीं मैं तो बता हम उधर पकड़ ले नहीं पकड़ ले those cubicles. So once the full thing is there, I can move to I can't do because they won't allow entry.
PhD side से थोड़ा सा I've spoken to him. They've done a lot of signage. I saw that and just understand. You are You always don't want to make contact with fiction. You laugh and stop fiction. What is the conversation that's already happened? I've had this with a guy who said, so send him hello, and then he will connect. That you You know, they हमारे को भी बोलो दें we have to send something सर अभी इधर पैक बना लीजिए that WhatsApp you written once but yeah, different ones, but Yeah. then said Endeavor, Endeavor. And then got it. We did once. change life. It is down. It is टीम कॉपी दो मैडम लोग मैंने कहा था ना needed है फ्रंट वाला जो पोर्शन ये क्वेश्चन डाल दिए बस IMF वाले भी थे not sure. Mitra, you again discussed with him. Is that Isn't it baggy? So much stress. and I thank you for being the whole format thank you so much. तो मैंने देख लिया मैंने एजेंडा देख लिया He's coming and Jitin. बना के लाई थी आपका कोडिंग वर्क्स You have to wait for the kids. मंगा
नहीं हो खाली मैडम और मंगा अपने हम लोग दिख नहीं रहे। ये तो सब आगे आगे सकती हैं तो सर इधर शायद देहरादून में तबीयत खराब थी। असिस्टेंट चाहिए थी। अमेजिंग पर्सन है मिनिस्टर अवार्ड Raja is not. He's not candidates. Era. तीनों कर्मचारी आ गए हैं। सभी को नमस्कार। परम सम्मानित आदरणीय सचिव महोदय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग श्री राजेश अग्रवाल जी, आदरणीय संयुक्त सचिव महोदय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग श्री राजीव शर्मा जी, सुश्री नुपुर झुनझुनवाला, को फाउंडर एंड ट्रस्टी चेंज इंक फाउंडेशन, उपस्थित सम्मानित व्यक्ति विशेष, विशिष्ट अतिथिगण, विभिन्न मंत्रालयों से आए वरिष्ठ अधिकारीगण, विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं से उपस्थित प्रतिनिधि एवं छात्र, उपस्थित दिव्यांगजन, दिव्यांग कर्मयोगी, दिव्यांगजन के रोजगार संबंधित कार्यरत विभिन्न संस्थाओं से उपस्थित अधिकारीगण एवं प्रतिनिधि, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सभी अधिकारीगण, मीडिया कर्मी, आप सभी का आज दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग तथा चेंज इंक फाउंडेशन द्वारा विश्व सामाजिक न्याय दिवस पर आयोजित दिव्यांगजनों के रोजगार पर आधारित सम्मेलन अर्थात कॉन्क्लेव ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज में सादर स्वागत है। वर्ष 2023 में विश्व सामाजिक न्याय दिवस का विषय वैश्विक एकजुटता को मजबूत करने और सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाने और अवसरों को उजागर करने पर केंद्रित है। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया ताकि समाज के सभी वर्गों से हितधारकों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जा सके, ताकि दिव्यांगजनों के रोजगार में आ रही चुनौतियों तथा अवसरों के बारे में जागरूकता पैदा कर सर्वोत्तम प्रथाओं अर्थात बेस्ट प्रैक्टिसेस और समावेशन के सफल मॉडल की पहचान की जा सके। आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मेरा सर्वप्रथम नम्र निवेदन संयुक्त सचिव श्री राजीव शर्मा जी से कि वे आदरणीय सचिव महोदय जी को कृपया शॉल तथा पौधा भेंट कर उनका अभिवादन तथा सम्मान करें। शॉल बाहर वाले के लिए रखो, मुझे सिर्फ पौधा। ओनली प्लांट। थैंक यू सो मच। आप लोग क्यों नहीं आ सकते? आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब मेरा नम्र निवेदन आदरणीय सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग श्री राजेश अग्रवाल जी से कि वे कृपया सभा को संबोधित करें। आज हम सब इकट्ठा हुए हैं वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, विश्व सामाजिक न्याय दिवस के अवसर पर। हमने इस साल एक थोड़ा सा नई एक्टिविटी किया है कि कैलेंडर ऑफ इवेंट्स बनाया है कि वैश्विक दिवस हैं अलग अलग,
या इंडिया रिलेटेड हैं, चाहे वो ब्रेल डे हो और किस तरह का भी हो, व्हीलचेयर डे हो, इस तरह की सारी एक लिस्ट बना के उसमें वी आर प्लानिंग ए नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ इन दैट सीरीज. दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट इवेंट जो हम सिर्फ दिल्ली में यहाँ पे फिजिकल इवेंट कर रहे हैं. बट नेक्स्ट ऑल द इवेंट्स वी आर प्लानिंग कि हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, CRCs हैं और रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ भी किए जाएंगे. तो ये एक शुरुआत थी, इसलिए हमने सोचा कि आज सिर्फ यहाँ से किया जाए. जब हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो उसमें सोशल इक्वालिटी वगैरह तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ी कोशिश की गई और बहुत प्रोग्रेस हुई है उस पर. जो आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करते हैं, वो तभी आएगी कि हम अपने बच्चों को उस तरह की शिक्षा दें, प्राइमरी एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हों. आज हमने उस थीम पे फोकस किया है. अभी पिछले 2 दिन मैं लखनऊ और अयोध्या में था, तो अपने स्पेशल स्कूल्स में भी गया, DDRS हमारे हैं उसमें भी गया. तो वहाँ भी यही चर्चा थी कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं. स्पेशल एजुकेशन में RCA के थ्रू, मेंबर सेक्रेटरी RCA के मैं अभी चेयरमैन हूँ टेम्परेरीली, तो तकरीबन 800 स्कूलों में 50,000 बच्चे पढ़ते हैं. फिर स्पेशल स्कूल्स में फिर उनके लिए हम स्पेशल एजुकेटर्स बना रहे हैं, रफली 20,000 बच्चे वो स्टूडेंट्स वो चीज़ पढ़ रहे हैं. आई वाज आस्किंग देम, आर वी फोकसिंग ऑन यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये बच्चे आगे चल के कैसे करेंगे. जैसे मैं ब्लाइंड स्कूल में गया तो बच्चों से बातचीत किया, टीचरों से बातचीत किया कि उनको हम क्या टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं. हम सिर्फ ब्रेल सिखा रहे हैं अच्छे ढंग से, वो भी ज़रूरी है, और उनको मोबाइल यूज़ अच्छा सिखा रहे हैं कि नहीं, कीपअप्स कैसे यूज़ करने हैं, बाकी चीज़ें कैसे यूज़ करनी हैं. जब ये बच्चे जॉब में जाएंगे, चाहे डेटा एंट्री प्रोग्राम बने, चाहे प्रोग्रामर्स बने या और कुछ भी करें, उनको कीबोर्ड भी आना चाहिए. तो हम बचपन से मोबाइल के साथ कीबोर्ड जोड़ के सिखा रहे हैं कि नहीं. सेम थिंग आई वाज आस्किंग टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़. आज हमने थैंकफुल टू नूपुर ऑल्सो, हमारी तरफ से नैन्सी ने ज़्यादा वो मेहनत की है. हम एक ग्रुप को इकट्ठा करें जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं, एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, उनसे पूछें. और इसीलिए मैंने अभी सभी ऑफिसर्स को भी बुलाया कि हमारे ऑफिसर समझें कि हमारी स्कीमों में चाहे DDRS हो, चाहे RCA की हो, चाहे और कोई भी हो, हाउ डू वी चेंज अवर पॉलिसीज बेस्ड ऑन देयर सजेशंस. फिर आज कुछ ये अचीवर्स हैं, उनसे बात करेंगे. हीरा हैं, राहुल हैं और लोग हैं, वो बताएं कि वो कैसे आगे बढ़े. आप हमें गाइड करिए कि आपको हाउ डू वी एनेबल अवर किड्स टू अचीव टू द मैक्सिमम ऑफ देयर पोटेंशियल. फिर हमारे कुछ बहुत अच्छे मॉडल एम्प्लॉयर्स हैं who have taken that leap of faith and decided कि हम we will give chance to people with disabilities to become our employees, and they will share their experiences definitely. मेजर जनरल शरद कपूर, उनसे मेरी बातचीत होती रहती है कि अपने जो फौजी भाई हैं बहुत इन द फील्ड, कई बार डिसेबिलिटीज़ आ जाती हैं, वो होते कर्मठ लोग हैं, उसके बाद वो ज़िंदगी में कैसे और आगे बढ़ें, उस पर विल हियर हिज व्यूज़. सो इट्स ए मिक्स ग्रुप टुडे. तो सरकार की तरफ से आई डोंट थिंक मेरे अलावा, मेरे छोटे से प्रास्ताविक के अलावा ज़्यादा लोग बोलेंगे. आज हम सुनने के लिए आए हैं सब लोग. तो विद दिस ब्रीफ इंट्रोडक्शन आई हैंड इट ओवर बैक टू द ऑर्गेनाइजर. It's a group of ladies who are organizing. आपके प्रोत्साहन तथा उत्साहवर्धन के लिए बहुत धन्यवाद. देवी और सज्जनों, नवंबर 2021 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मिशन लाइफ का आह्वान किया, जो कि पृथ्वी के संरक्षण पर केंद्रित है. और इसी पहल का समर्थन करते हुए अब हमारा नम्र निवेदन आदरणीय सचिव महोदय जी से कि वे कृपया कर्म योगियों को पौधा भेंट कर तथा शॉल पहनाकर उनका अभिवादन तथा सम्मान करें. सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहेंगे शबरा बेगम को.
आदरणीय सचिव महोदय दिव्यांग कर्मयोगियों को सम्मानित करते हुए कहेंगे कि शबरा बेगम जूनियर स्टेनो के पद पर कार्यरत है रेलवेज में। करना चाहेंगे राजू कुमार जी को। राजू कुमार जी जो सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट रेलवेज में कार्यरत हैं। सम्मानित होते हुए अभिवादन स्वीकार करते हुए सभी को मैं भी एक साथ थोड़ा सा फोटो हम लोग एक साथ 3 बार। सर सबको एक साथ आमंत्रण देना चाहेंगे हरीश जी को। आमंत्रण देना चाहेंगे हरीश जी को जो जीएसटी इंस्पेक्टर सीबीआईसी में कार्यरत है 2 नवंबर 2022 से। उन्होंने भी आना है। नहीं कहा ना मैडम भी तो है शायद और सब ग्रुप में लेता हूँ सब। दूसरे दोनों बच्चे आ जाओ। आ जाओ आप लोग राजू अभिषेक आप भी आ जाओ। मिशन कर्मयोगी की बात हो रही है तो आप भी आ जाओ। गाँव में भी लोग सुन आइए आ जाओ बच्चे आ जाओ एक आदमी इधर आ जाओ। आप इधर आ जाओ। हीरा इधर से चाहिए। हाँ हीरा तो है ही। मैम थोड़ा सा आगे आइए। मैम एक्सक्यूज मी। आगे आ जाओ। आप पुरानी हो गई। यस प्लीज। नए बच्चों को चांस यस दे रहे हैं। मैम यस सर यस कर रहा हूँ। अरे सर प्लीज बस एक्सक्यूज मी यस प्लीज थैंक यू। चलो जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। यहाँ आपसे साझा करना चाहेंगे कि इन सभी दिव्यांग कर्मयोगियों को कर्मयोगी भारत द्वारा रोजगार मेले के जरिए आइडेंटिफाई कर उन्हें रोजगार दिया गया। और अब हमारा पुनः नम्र निवेदन शबरा बेगम जी से कि वे कृपया अपने विचार हमारे साथ साझा करें। वहीं बैठ के करेंगे। वहाँ माइक है। माइक वो माइकलेस ही हॉल। सर ये सेंट्रली इंस्टॉल्ड है कहीं से भी अब ये कैमरा इनको कैप्चर कर लेगा वहाँ से। ठीक है। यहाँ जो भी बोलते हैं माइक है इनके पास। एक का सर हॉल में है इनबिल्ट है वो अलग से माइक थोड़ा सा मेरा नाम शाबरा बेगम है, कानपुर से हूँ। मैंने रिसेंटली पहले से ही स्टेनोग्राफर की पोस्ट पे ज्वाइन किया है में। मैं यानी कि आपको 40% और मैंने मेरी जो शिक्षा हुई है कानपुर से हुई है। मेरे पापा का इंतकाल 2013 में हो गया था और इसके बाद मेरी मम्मी बीमार रहने लगी। मम्मी का भी इंतकाल हो गया 2017 में। इसके बाद मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई अपनी छोटी सिस्टर के पास। यहाँ पर आकर मैंने प्राइवेट जॉब की 2 साल तक और जॉब करने के दौरान मुझे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और इसके बाद
मैंने गवर्नमेंट सेक्टर के लिए अप्लाई करना चालू किया और मैंने काफ़ी मेहनत करने के बाद मैं स्टेनो की पोस्ट पे मैं अभी ज्वाइन हो गई हूँ और मुझे रोजगार मेले में मिशन कर्मयोगी के बारे में पता चला। मैंने वहाँ से काफ़ी कोर्स मुझे सबसे जो अच्छा कोर्स लगा है वो कोर्स है सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में, महिलाओं के बारे में और उनके अधिकारों के बारे में पता चलता है, जिससे मतलब बॉयज़ और गर्ल्स को अपने दायरे में रह कर के कैसे बिहेवियर करना चाहिए ये पता चलता है। और अंत में ये कहना चाहती हूँ मैं कि हर व्यक्ति जो भी मेहनत करता है तो उसे सफलता ज़रूर मिलती है, तो सबको मेहनत करनी चाहिए और जैसे कि मैं डिसेबल होकर भी मैं जॉब ले सकती हूँ तो कोई भी ले सकता है। शुक्रिया, धन्यवाद। जो बोल रही थी, मैं तो ऊंचा बोल रहा हूँ थोड़ा सा, तो आपको आवाज आ रही है उधर? नहीं आ रही ना, तो ये थोड़ी दिक्कत आ रही है। माइक ऑन करो। इधर कोई माइक है क्या? मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं वहाँ तक? जहाँ ग्रीन लाइट्स है ना उधर ज़्यादा क्लैरिटी है। अच्छा, तो फिर नहीं, जिसको भी बोलना है वो उसके लिए यहाँ चेयर लगा दी जाए क्या? ऐसा करें क्या? सर सबको उतना प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम हो, ठीक है। चलिए, हमारे यहाँ भी यादव तो जो जॉइंट सेक्रेटरी गए हुए हैं, डायरेक्टर झा है क्या अपने? नहीं सर, वो नहीं है। फेलोशिप स्कीम वगैरह जो अपनी नहीं चल रही, तो वी शुड लिसन टू देयर व्यूज। उन्हें आई गॉट पे जाके सीखा तो ठीक है। नेक्स्ट। अब हमारा नम्र निवेदन राजू कुमार जी से कि वे कृपया अपने विचार हमसे साझा करें। नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम राजू कुमार है। मैं बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मेरे पापा किसान हैं और वो खेती करते हैं। मेरी 3 बहनें जिनकी शादी हो चुकी है, एक छोटा भाई है जो अभी पढ़ाई कर रहा है। मैं वर्तमान में इंडियन रेलवे में जूनियर इंजीनियर के पद पे कार्यरत हूँ। मेरा एजुकेशन डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दरभंगा से है। ऑलरेडी मैं इससे पहले नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के जॉइंट वेंचर रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड में ऑलरेडी मैं 3 साल जॉब कर चुका हूं। और जब मेरा इंडियन रेलवे में ज्वाइन हुआ तो इसके बाद मैंने कर्मयोगी भारत का 8वां मॉड्यूल कोर्स किए, जिसमें मुझे सबसे अच्छा कोड ऑफ कंडक्ट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड सेल्फ लीडरशिप, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोटिवेशन मुझे सबसे अच्छा लगा। जिसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट मुझे सबसे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि इसके थ्रू अपने जूनियर सीनियर का प्रेशर और प्लस फैमिली का प्रेशर आसानी से हैंडल कर पाऊंगा। और अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोटिवेशन के थ्रू मैं अपने खुद को मोटिवेट करता हूं। और सेल्फ लीडरशिप के थ्रू मैं एज ए जूनियर इंजीनियर जो सुपरवाइजरी पोस्ट होती है तो मेरे नीचे बहुत सारे होंगे, जिससे मुझे उसे एक डायरेक्शन दिखाना होगा ताकि वो आसानी से कोई भी काम कर पाए। तो मुझे सेल्फ लीडरशिप भी बहुत अच्छा लगा। और इस सारे कोर्स करने के बाद मैं इस सारे में टॉप पे था, तो मुझे प्रधानमंत्री जी से भी बात करने का मौका ऑलरेडी मिल चुका है। और मैं कभी भी दिव्यांगता को एक नेगेटिव में नहीं लेता हूँ, हमेशा मैं उसे एक स्ट्रेंथ की तरह देखता हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं आज यहाँ तक पहुँचा। धन्यवाद। अब हमारा नम्र निवेदन हरीश जी से कि वे कृपया अपने विचार हमारे साथ साझा करें। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम हरीश कुमार है। थोड़ा सा ऊंचा बोल सकते हो, नहीं तो उधर सुनेगा नहीं। नहीं, ये माइक नहीं एक्चुअली, ये तो कैप्चर था। मैं मूलतः दिल्ली का ही निवासी हूँ और अपनी CGL परीक्षा 2019 के माध्यम से मेरा चयन CGST सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए हुआ और वर्तमान में मैं मुंबई में कार्यरत हूँ। और इसी दौरान मुझे ट्रेनिंग पर भी भेजा गया और मैंने अपना इंडक्शन ट्रेनिंग कंप्लीट किया है अभी। मैं अपने लाइफ का एक्सपीरियंस अपने कुछ फेजेस में बताना चाहूँगा। जैसे मेरा स्कूलिंग अच्छा रहा, मैंने गवर्नमेंट स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी करी, 10th किया और जोनल टॉपर रहा और इंदिरा अवार्ड भी लिया वहाँ से। 12th में भी मैंने कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ाई की और जोनल टॉपर और इंदिरा अवार्ड ही रहा। फिर मैंने BCom ऑनर्स किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से और 2017 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट में मास्टर्स किया। और 2018 की ही तैयारी के दौरान मैंने नेट JRF के लिए क्वालिफाइड किया और JRF के साथ में मैंने PhD करने का निर्णय लिया।
JNU से मैंने PhD के लिए आवेदन दिया और सेलेक्ट हुआ, और मेरे सब्जेक्ट जो रिसर्च के लिए रहा वो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन इंडिया में है, और किस तरह से हमारा स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रहा है और आगे बढ़ा रहा है, इस पर मेरा कार्य है। इसी के दौरान 2019 में मेरा जब चयन हो गया तो मैं इंडक्शन ट्रेनिंग गया, और वहाँ पर इंडक्शन ट्रेनिंग के दौरान ही आईगोट पोर्टल से जब मुझे मैसेज मिला, मेल मिला, तो मुझे कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल के बारे में पता चला। मैंने इस मॉड्यूल पर उपलब्ध सारे कोर्सेज किए, और ये कोर्स हमें जीवन के विभिन्न डायमेंशंस में मदद करते हैं और एक निर्देश प्रदान करते हैं। इंडक्शन ट्रेनिंग के बाद जब मैंने अपनी ज्वाइन की, अपनी पोस्ट ज्वाइन करी एज एन इंस्पेक्टर, तो जो टेक्निकल नॉलेज होता है वर्ड का और एक्सेल का, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा अपने वर्क के लिए। साथ ही जो स्ट्रेस मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं वो भी काफ़ी हेल्पफुल हैं। मोटिवेशनल थ्योरीज हैं डिफरेंट थ्योरिस्ट की, और वो काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, जिनका यूज करके हम अपने आप को इंटरनल मोटिवेशन के लिए अपने इंटरनल मोटिवेशन को कर सकते हैं अपने आप को। और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो स्टफ है श्री श्री रविशंकर जी का, जो काफ़ी मॉरली हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है, और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोर्स भी हैं। इससे पहले एक बैरियर रहता है लाइक पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ, नॉट ऑल टाइम बट कभी कभी ऐसा होता है कि एक सोशल कट डेवलप हो जाता है बिकॉज ऑफ मल्टीपल बैरियर्स एंड रीजंस, तो वो कहीं कॉन्फिडेंस को और एक्सप्लेनेशन और उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्पैक्ट कर देता है। तो ये कोर्स इफ़ेक्टिव है उस चीज़ को ठीक करने के लिए। और इसके साथ ही जब मैंने जॉब की है, ज्वाइन किया है, तो कुछ बैरियर्स को भी देखा, ऑल्दो उससे पहले वो स्कूल लेवल पर कॉलेज लेवल पर हुआ करते थे। लाइक मैं अभी मुंबई में पोस्टेड हूँ, तो वहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन का फंडामेंटल मीन है वो लोकल ट्रेन है, जो इकोनॉमिकल भी है और एक्सेसिबल है, लेकिन वहाँ पे सेपरेट बॉगी है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, बट बिकॉज ऑफ द रश एंड पीक आवर ट्रैफिक एंड ऑल, वो बहुत इनएक्सेसिबल हो जाता है। तो वहाँ पर जो पोस्टेड लोग हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी, वो उस लोकल ट्रेन से ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, तो एक वर्क कल्चर और परफॉर्मेंस जो है वो इम्पैक्ट हो जाता है पर्सन विद डिसेबिलिटी का ऑफिस पर। ये मैं भी लास्ट 1-2 महीने की पोस्टिंग में फील कर रहा हूँ, तो दिस इज़ वन ऑफ द एक्सपीरियंस। तो इसके साथ ही मैं एक सजेशन इसमें ये रखना चाहूँगा अपने कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल में, कि इसमें कोर्स है जेंडर सेंसिटाइजेशन को लेकर के, जो बहुत अच्छा है और उसके बारे में हम सबको अवेयर होना चाहिए। बट इसी तरह का एक कोर्स डिसेबिलिटी सेंसिटाइजेशन के लिए भी रखा जा सकता है, जो बहुत मदद करेगा सोशल इंक्लूजन में पर्सन विद डिसेबिलिटी का, क्योंकि हम जैसा बिहेव एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो सामने जो पर्सन इस कैटेगरी से नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, वो एक्चुअली में अवेयर नहीं है कि कैसे बिहेव करना है। रीज़न, इंडक्शन ट्रेनिंग में जब मैं था तो 100 बैच, मतलब 100 कैंडिडेट्स थे बैच में, और मैं 20 लोगों से इंटरेक्शन कर पाया जस्ट बिकॉज ऑफ माई फर्स्ट इनिशिएटिव। पहले मैंने इनिशिएट किया, तो बाद में मुझे पता भी चलता है कि ऐसा नहीं है कि वो लोग अवॉइड करते हैं, वो एक्चुअली इस थोड़ा कन्फ्यूजन में होते हैं कि हाउ टू इंटरेक्ट विद दिस पीपल, कहीं वो हमारे बिहेव से हर्ट ना हो, कुछ इस तरीके का। लेकिन अगर डिसेबिलिटी सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम होगा तो दे विल बी वेल अवेयर अबाउट आवर प्रेजेंस एज वेल, बिकॉज वी डू नॉट वांट टू बी इनविजिबल एनीवेयर। तो सर एक ये सजेशन था। और सर मैं फेस करता हूँ कि जब पोस्टिंग दी जाती है या फिर ट्रांसफ़र ऑर्डर निकलता है पर्सन विद डिसेबिलिटी का, तो एट ऑफ सडन उसे एकोमोडेशन का प्रॉब्लम आता है। ऑफिस से रेजिडेंट के बीच में दूरी ज़्यादा हो जाने पर वो अकोमोडेशन प्रेशर कहीं ना कहीं उसकी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर रहा होता है। तो वट एवर आई कैन फाइंड आउट बाय द टाइम नाउ, वो ये है कि अगर उनको उनके ट्रांसफ़र ऑर्डर और उनके पोस्टिंग ऑर्डर के साथ एडहॉक एकोमोडेशन और एकोमोडेशन इंश्योर की जाए, तो ये मेंटल एगोनी उन्हें परेशान नहीं करेगा और वो अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो वन ऑफ द सजेशन सर। और ये जॉब जो मुझे मिली है यूनिफॉर्म जॉब है, और मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि यूनिफॉर्म जॉब होगी विद 3 स्टार्स, तो वो बहुत कॉन्फिडेंस देता है, बहुत बूस्ट देता है। और मैं इसी के साथ देश की सेवा करने के लायक हूँ, देश की सेवा कर पाऊँगा, इसमें मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो जाने की वजह से भी जो बाकी बैरियर्स होते हैं एक पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ, वो भी बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट के इन सभी इनिशिएटिव के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ गवर्नमेंट का, और थैंक यू वेरी मच सर।
अपने विचार हमारे साथ साझा करने तथा अपने बहुमूल्य सुझावों को हमारे आगे रखने के लिए आप सभी का पुनः धन्यवाद। निस्संदेह आप सभी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं तथा अपने कर्तव्य पथ पर कर्मठ रहने की हम सभी को प्रेरणा प्रदान करते हैं। और अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारा नम्र निवेदन CEO कर्मयोगी भारत श्री अभिषेक सिंह जी से। इसमें अभी ऐसा करते हैं, मेजर जनरल साहब को अभी जाना है मीटिंग के लिए, पहले उनको सुन लेते हैं। सो आई रिक्वेस्ट मेजर जनरल शरद कपूर जी। Thank you. Thank Can I, you. Abhishek? I hope you don't mind. Thank you very much. Sorry, I'll join back, but I just got to. आदरणीय सेक्रेटरी महोदय मिस्टर राजेश अग्रवाल, हमारे कर्म योगी सीनियर ऑफिशियल डिपार्टमेंट के, मैं देख पा रहा हूँ चेंज इंक के मिस नुपुर झुंझुनवाला, मिस्टर अभिषेक सिंह CEO कर्म योगी भारत, मिसेस नैन्सी स्पेशली जिन्होंने मेरे को इनवाइट किया, एंड लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मुझे आज बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर ज्वाइन करके, जो कि मेरे को मैसेज सेक्रेटरी साहब का आया कि ऐसे ऐसे हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो आपके भी काफ़ी नंबर हैं डिसेबल्ड के और जिन्होंने देश के लिए काफ़ी काम किया है। हम चाहेंगे कि आप आएँ, अपने विचार रखें और हमारे से विचार लेके जाएं ताकि हम जॉइंट आगे बढ़ सकें। सर, रियली ऑनर्ड यहाँ पे आज बैठे होने का। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि विजन जो सेट किया है हमारे ऑनरेबल सेक्रेटरी जी ने, वो बहुत बढ़िया है, क्लियर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और आज दुनिया जॉइंटमैनशिप की तरफ जा रही है। अगर जॉइंटली हम आगे बढ़ते हैं, हर आदमी को साथ लेके, चाहे वो स्टेज के उस तरफ है या स्टेज के इस तरफ है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सिर्फ कर्म योगी ही नहीं यहाँ पे बैठे हैं जो उनको पीछे से उनको मोटिवेट कर रहे हैं, वो हैं यहाँ पर, प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सब, और मैं भी जुड़ गया हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इसको लेके चल सकते हैं, क्योंकि यही जॉइंटमैनशिप इज़ कॉल ऑफ द डे। ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल क्लियर है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, हमारे भारतीय डिफेंस फोर्सेस के अंदर भी काफ़ी लोग जवान, बहादुर जवान और JCOs ऑफिसर्स, जैसा आप लोगों ने देखा ही है, कई जगह पर वो ब्लेड रनर हैं के नाम से जाने जाते हैं। तो ये सब अपने देश के काम के लिए ड्यूटी पर अपने आप को, अपने लिम्स को गवा देते हैं, जिससे कि वो एक उनके लिए चैलेंज हो जाता है, जो कि एक अच्छे तरीके से रह रहे होते हैं। बट कई आपने देखे होंगे, हमारा एक माउंट एवरेस्ट भी चढ़े हैं। तो ऐसे करके हमारे पास काफ़ी हैं, क्योंकि उनका जज्बा नहीं ख़त्म होता बल्कि जज्बा और बढ़ जाता है, और वो अच्छे ब्रांड एम्बेसडर है। जैसे आपने देखा होगा मिसेस मलिक, जिन्होंने कि ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड जीते हैं, और आजकल वो उनकी हेड है, प्रेसिडेंट है डिसेबल्ड पैरा ओलंपिक्स की। तो इस तरीके से हमारे पास काफ़ी हैं। हमारे 2 पैराप्लेजिक सेंटर्स हैं पूना और मोहाली में, जो मैंने ऑनरेबल सेक्रेटरी जी को रिक्वेस्ट किया था कि एक दिन आपको मैं लेके जाना चाहूँगा वहाँ पे, ताकि आप उसको देखें कि हमने किस तरीके से उन पैराप्लेजिक सेंटर्स को, उसमें हमारे जो जवान है, एक नेशनल लेवल बास्केटबॉल खेलता है, वो वहीं पे है अभी, तो कई नेक के बिलो वो वहीं पे लेटे हुए हैं, उनको किस तरीके से हम देखभाल करते हैं और किस तरीके से उनको हम आगे लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये हमारा वो रहता है। इम्पॉर्टेंट है कि हम कर्मयोगी की एक उसकी एबिलिटी को पहचानें। अगर हम एबिलिटी को पहचान लेंगे तो उसको उस तरफ ले जाना बहुत आसान हो जाएगा। क्या होता है कि हम उनको सबको, जैसा मिस्टर हरीश ने भी कहा, कि हम सबको एक इकट्ठा जोड़ देते हैं। इकट्ठा नहीं, हर एक का अलग अलग तरीका है, अलग अलग डिसेबिलिटी है, और अलग अलग उसका स्किल लेवल है, और वो अलग अलग उसमें मोटिवेशन है कोई किसी तरीके से। तो इस तरीके से अगर हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे उनको, तो शायद हम आगे बढ़ पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं देख रहा हूं कि आदरणीय सेक्रेटरी महोदय का विजन जो बिल्कुल क्लियर है, कि जैसा मैं देख पा रहा हूं कि इंडियन कैनवस पे अब चेंज आएगा डिसेबिलिटीज़ या इस तरीके की चीज़ों को लेके, क्योंकि पॉलिसीज़ रिव्यू होंगी, पॉलिसीज़ अच्छे तरीके से आएंगी, नेशनल लेवल पॉलिसीज़। जैसा कि मिस्टर हरीश ने अभी हमें बताया कि ट्रेन में है डब्बा, लेकिन वहाँ तक पहुँचना और उस पर काम करना इटसेल्फ इज़ अ चैलेंज। तो इस तरीके से मैं श्योर हूँ कि सेट ऑफ पीपल इन द डिपार्टमेंट विल मेक श्योर कि इंडिविजुअल का घर से लेके उसका ऑफिस तक का पूरा
और वापस घर आना एक इस तरीके से बन जाए ताकि उसको कोई कमी ना लगे और वो ये ना महसूस करे कि मैं किसी के रहमो करम पर चल रहा हूँ। उनमें एबिलिटी है, सिर्फ हमें उनको आइडेंटिफाई करना है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब ने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के विजन को ध्यान में रखते हुए इसको आगे बढ़ाने का किया है, जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से मुझे लग रहा है कि हम उनके विजन को, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के विजन को इकट्ठे हम मिलके इसको ले जा सकेंगे। मैं बताना चाहूँगा, हमारे आर्मी के अंदर आशा स्कूल्स हैं जिसमें कि चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी आते हैं। मैं एक ऐसा स्कूल जम्मू में खुद रन कर रहा था। मैंने सेक्रेटरी साहब को रिक्वेस्ट की हुई है कि कभी हम चलेंगे इकट्ठे, मैं उनको दिखाऊंगा। वो इंडिया में सबसे बेस्ट किया गया था। मैंने अकेले नहीं किया था, मेरे को एक बहुत अच्छी मिसेस AP सिंह उनका नाम है, कर्नल की वाइफ, उन्होंने कोर्सेज किए हुए हैं, वो मिली और हमने उसको मिलके आगे बढ़ाया, जिससे कि हमने 3 बच्चों को वहाँ से नॉर्मल स्कूल में डाला और 2 को हमने जॉब भी दिला दी। तो इस तरीके से हमने काम किए वहाँ पे, तो बड़ा अच्छा लगेगा। हम इकट्ठा मिलके मिनिस्ट्री के साथ मैं बात करूँगा। अपने फर्स्ट लेडी जैसे नेवल चीफ की वाइफ को मैंने आज मिलना था, बट इसके कारण मैं नहीं मिल पा रहा हूँ। मैं मिलके उनसे सबसे हम इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना चाहेंगे। इसको भी मेरे खुद का फर्स्ट कज़न वो पिछले 55 साल से बेड पे लेटा हुआ है। मेरे 2 बहुत खास दोस्तों के 2 बच्चे लड़की हैं, वो भी बेड पे हैं। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि डिसेबिलिटी होना कितना बड़ा चैलेंज है अपने में, और उसको हम लोगों को जो भगवान के दिए हुए आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक है, तो हमें चाहिए कि हम उनको साथ लेके चलें और कोई उन पे, जैसे बताया मिस्टर हरीश ने भी, रहमो करम नहीं, उनकी एबिलिटीज़ को पहचाने और उनको आगे लेके जाएं। अंत में मुझे बहुत खुशी हो रही है दिल से कि मैं बहुत अच्छी जगह पे आया हूँ जिसमें एक नेशनल कॉज है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ बैठ के। सॉरी मेरे को थोड़ा बीच में जाना है एक इम्पॉर्टेंट, बट मैं वापस आके इमीडिएटली जुड़ जाऊँगा। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद। बहुत धन्यवाद मेजर जनरल शरद कपूर सर, डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट। और अब हमारा नम्र निवेदन CEO कर्मयोगी भारत श्री अभिषेक सिंह जी से कि वे कृपया सभी को संबोधित करें। Thank you. Thank you. First and foremost, I would like to congratulate the Ministry of Social Justice and Empowerment, the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, and especially Secretary Sir for taking this initiative on this very important World Day of Social Justice, on organizing this event, getting the persons with disabilities who have made a mark in spite of after overcoming the various struggles and the obstacles that we in the society put for them. And they have come up with bright colors. We have heard the 3 Karam Yogis who were given government jobs through the Rozgar Mela initiative of the government, and who have completed the Karam Yogi Praram module on I Got Karam Yogi Bharat, and we heard their stories and about how they have been able to excel and overcome the disability that they had. I also see our colleague Ira and Rahul here from the financial sector, and they would also be sharing their stories with regard to how they have overcome this. So this is a very important day on which we are reflecting upon what we as a society, what we as the government can do in order to empower persons with disabilities. Our Honorable Prime Minister, he refers to them as Divyangjan. वो हमेशा यही कहते हैं दिव्यांगजन है, और इनके लिए हमको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम क्या कुछ कर सकते हैं इनकी प्रतिभा को निखारने के लिए, बिकॉज ऑल ऑफ देम हैव लॉट्स ऑफ पोटेंशियल. वी ओनली नीड टू क्रिएट द राइट इकोसिस्टम सो दैट दे आर एबल to harness that and they are able to achieve their potential. In fact, if you look at a very basic level, even us, like I'm lucky to get these glasses. This is helping me overcome my disability of not being able to see properly, not being able to read properly. But there is a very simple tool. This is easily accessible. I can go to this, and there is no stigma associated with wearing spectacles or glasses and to be able to do the basic work. In some ways, we all have some disability in ourselves, and only question remains is that the tools and the mechanisms to overcome the disability, how easily it's available to all of us. Some may get it easily like us,
some may get a hearing aid, some may get a walking stick, some may get a crush, some may get some other assistance for overcoming their disability. Some may get a wheelchair, but all of it, when it is provided to the person, he or she is able to achieve their own potential. So our job should be in order to recognize that yes, there is something that we need to do, and there is none, and we should never look at any Divyangjan or any disabled person as something that is that they are on fault for some any other reason. If we are able to think that, if we are able to travel the journey across the table maybe, and if we can look at the world from the perspective of a Divyangjan, we will be able to find solutions which can help address many of these challenges. We talk about in technology. My other role apart from Karam Yogi Bharat is in Ministry of Electronics and IT, wherein we implement Digital India projects. So in Digital India, again, whenever we think of building any any tech solution, any e-governance project, the question of inclusion comes in, that how do we make it use assistive tech to in order to ensure that whichever application is being built up, whichever portal is being built up, whichever website is being built up, are they accessible? Do people with visual disabilities, will they be able to access the content? When we design very complex captchas, do we kind of make it also audible in order to ensure that people who can't read, people who can't see, and they can not be only people who are visually impaired, they can be people who are on the wrong size of 40 or 50 and they have like problems of near vision, and they also can't read some of the captchas that we design. So how we can build it in our designs in order to ensure that people can access that. We have the rights to people with disabilities, one of the most progressive laws across the world. It recognizes all 21 kinds of disabilities. It recognizes intellectual disabilities, the SLDs, the specific learning disabilities. How do we kind of provide a adequate, inclusive learning environment to the children who SLDs in their classrooms? How do we ensure they are provided tech tools, assisted tech tools, in order to ensure that they are able to read text which is in bigger size, use assistive tech. Today there are so many AI tools which help children with ADHD, which helps children with autism, which helps children with dyslexia. Can they be made easily available and accessible to all? Can we make people aware? Can we make parents? Can we make teachers aware about the learning disability that we exist? Because very often we find that in many schools and many families, because people are not aware of that, they look at such children from a different lens. They start thinking that the children are not smart enough. They make spelling mistakes, they make calculation mistakes, without realizing that they might be having some other capabilities and skill sets which we are not giving them chance to come out, which is kind of inhibiting their achieving their potentials. So all this requires a lot of sensitization, all this requires a lot of awareness building, all of it requires a lot of enabling tools which helps us in diagnosing many of these disabilities, enabling tools which and creating an environment wherein people are given access to many of the solutions which exist. Glass spectacles are available to us, but for a dyslexic child or for a child with dyscalculia or for autistic child, are similar interventions available? There are solutions. We need to democratize them. We need to make them available. We need to make them accessible across the country. Even diagnostic tools. Very often we do not have diagnostic tools for testing that. But I am sure with the right interventions, with the initiatives the Department of Empowerment of People with Disabilities is taking, this will become a thing of the past. And then at part of Karam Yogi, what we are trying to do is that we are trying to provide courses which helps persons with disabilities to learn about that course, to learn about their regular jobs. In all our courses that are published, we have kind of reached out to all departments which have published courses. We have around 350 courses on the Karam Yogi platform to ensure that these courses are made inclusive. These courses are made, if people cannot read a PDF, they should be able to hear a PDF. Technology allows that. So this intervention is being made on the Karam Yogi platform. Today, sir, for the Social Justice Day, we have launched a campaign for making people do a course that we have on social legislation. There is a course on Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act 2007, and we also have a course on Protection of Women from Domestic Violence Act 2005. But unfortunately, as Harish was mentioning, we do not as yet have a course on a Rights of People with Disabilities Act, which was passed by the Parliament in 2016, I believe. And then we also don't have a course on sensitizing people towards the Divyangjan or towards disabilities. But
I would, from our side, sir, I would offer all support. The content will come from the domain ministry, but we can work together to create a course on Rights of People with Disabilities Act, as well as sensitizing people towards disabled. This kind of courses we have made available. It will be useful for everyone, and then we can launch a campaign to ensure that every government employee is sensitized on this, is kind of made aware of the legal provisions, made aware of the other solutions which are available for them to access better content and to learn better. So all of this, sir, Karam Yogi Bharat will provide. And last and not the least, sir, I would thank the department and your partners, Change Inkk, and the other social organizations who are part of organizing today's date, and all the senior officers of the department and all other stakeholders who are working in this field, for coming together, for organizing this, for honoring our Karam Yogis. These three are, sir, present here physically, but they represent a whole group of government servants who are people with disabilities, who are learning on the I Got Karam Yogi platform, and we will take this message to each one and every one of them and ensure that we are able to create a more equal world, a more inclusive world. I have 2-3 immediate requests to Abhishek. One is, many times government employees may not take a standalone course, even if it is 2-3 hours, on sensitization towards PWDs. So probably if you can embed it in your popular courses like ASO course, SO course, those 2-3 hours, that would be useful. Secondly, we should work together to make a small course on what technologies are available, make life comfortable for PWDs, for blind, deaf, locomotor, what kind of government schemes are available, what is covered under CGHS, the surgical procedures or the assisted devices. Are you fully aware that what kind of devices are available to you, at what cost, and so on? So we should put together that. Yeah. Thank you. Thank you so much, sir, and our heartfelt gratitude to you for sharing your thoughts and sharing the working of Karma Yogi Bharat with us, sir. So with this, we are now going to start our first session of this conclave, which is based upon sharing of experiences, the journeys of successes of professionals with disabilities. Our speakers for this session are Mr. Rahul Gupta, Managing Partner and Founder, Valuable Capital. He is a graduate from St. Stephen's College and Delhi School of Economics, and is an accomplished professional with more than 17 years of rich banking experience in India and UK, and now embarked on an entrepreneurial journey to introduce valuable capital that will make strategic technological investments to mainstream inclusion, especially for the Divyangjans. Breaking all the myths on PWDs and their abilities, he has excelled in the profession of banking, which is rather inaccessible for persons with visual impairment. And our next speaker of this session is Ms. Ira Singhal, Deputy Commissioner, Office of Divisional Commissioner, Delhi. Ma'am is the first person with disabilities to top the prestigious civil service examination of 2014, rejected thrice by the government as an IRS officer in the same exam despite clearing it due to her disability, but she decided to fight the rejection in Central Administrative Tribunal and won after a battle of 3 years. And now in her 6 years of career as an IAS officer, she has handled various respected profiles like DC Keshapuram Zone, Director Community Services, Director Press and Information, Joint Director Department of Women and Child Development, Joint Director Department of Social Welfare, etc., to name a few. And the session will be moderated by Ms. Nupur Junjunwala from Change Inkk Foundation. Ma'am is the co-founder and trustee of Change Inkk Foundation and has an extensive experience in impacting national and global goals for women empowerment, disability inclusion, financial inclusion, education, and digital inclusion. And she is also a parent advocate for a teenage dyslexic daughter. And now, without taking much of the time, I would like to hand over the dais to the moderator, Ms. Nupur Junjunwala, ma'am, to take over the session, please. Thank you so much. So welcome, Rahul and Ira. I would like to start our questions from the very beginning. As a child, it might not have been easy for the dreams that you drove, but clearly that's where the foundation of all start. Can you tell us a little bit about your childhood and what enabled you to become so ambitious and achieve all these goals? What were your support systems? How did that go?
Go ahead, Ira. Good afternoon, everyone, and thank you so much for inviting me. I think you asked a very relevant question because for most children born with disability, it all starts with childhood, and childhood defines whether you're going to achieve something in life or not. Because it's the home environment which sort of defines how your mental construct of yourself comes out. So I was very lucky. I was born in a family which from childhood told me that this is your disability, but that does not mean that your disability is an excuse for all your abilities. So the primary focus was that yes, you have these physical problems and you have these medical treatments that you need to go through, but besides that, that doesn't mean you can slack off in school. And if you're good at something, you have to work hard towards that. So I was never made to feel ashamed of being disabled. I was never made to feel that there was something wrong with me as a person. There was something wrong with my health, which needed focus, which needed me to work on it, but never something wrong with me as an individual. So, I mean, I was never allowed to take my disability as an excuse, and I think that worked really well, because a lot of times what happens is that kids are allowed to think, oh, bechara, he's got this problem, so oh my god, poor thing, let him not do all the other things also. You kind of get away with not being forced to do other things. I was never given that excuse, and I was never treated that kindly in my home. In my family itself, I was forced to do everything, and the standards set for me were actually higher than they were for the rest of my cousins. So I was in a joint family, and they were higher than they were for the others. Because if I'm good at something, then my standard for those things were at par with the social standards, So if I was good at studies, then I was supposed to be in the top 2, 3. My parents wanted top, but obviously I was not ambitious enough for that. So the thing was that disability was not the focus of my growing up. And that, I think, defined everything, because that didn't allow me to think of myself as less and hence have lower ambitions or lower standards of performance for myself. That's great to hear. Rahul, over to you. First of all, thank you, Nupur. Thanks, sir, for having me over and giving me an opportunity to talk. So, can you speak a bit louder? Yes, I can. So, I mean, when I reflect back, it's a very famous saying, ignorance is bliss. So I don't know whether that played out, or because not just me, I had 2 more cousins who were visually challenged. So I think we were a mix of some cute little jokers who were running around, and probably parents never felt that we were differentiated kids. But I mean, besides the whole vision thing, I had a very difficult childhood in terms of medics. I literally spent almost 7 to 8 years of my childhood in the hospital, saw death nearly 3 to 4 times. And they say that it's always one person. I say that there are 4 large pillars to every child, or every individual. First is the mother and the family. Second, medics. Third, teachers. And fourth, society, which of course is the larger circle that sits outside. I think for my mother, as Ira said, and it completely resonates. For my mother, I was just a child, and she saw her world through me. We are 2 brothers. I still remember she used to really copy notes for me. There was a time when my vision dropped to almost 5%. One day I got quite disheartened. I was in school. I'm talking about 1992, when computer was a rare commodity. And on one screen there were 4 kids sitting. And I came back and said, how do I work? My grandmother in 95, she said, whatever come be, we invested almost 90,000 rupees in that in time, right? I got a computer, and the best was in my grade 10th exam, I actually did the computer project for my school top. But the whole thing is, it's that one belief. So my mother took that baton. Second, the medics. I think the doctors never said your child is useless. And this is one story that I keep hearing. And I request the department, and sir especially, one thing that we hear from a lot of parents, the biggest problem is a child is taken to a doctor and the doctor says, आपका बच्चा बेकार है. Parents का वही मोरल खत्म हो जाता है. Parents are not even encouraged to constantly see
see the doctors again. I remember there's this very senior doctor at AIMS. She's now retired, but she actually used to give money to the parents saying कि आप जब दोबारा आएंगे तो मेरे से टिकट के पैसे ले लीजिएगा और बच्चे को दिखाइएगा. We have seen that technology is progressing so much. At times there is solution available, but kids lose on that. Then teachers. I think my teachers again, they were very interested. They were willing to support me. I still remember I had to write my exams with a 100-watt bulb on my left. But it was just another thing for my principal and my teachers. So then is the education ecosystem aligned. I think जब ये तीन मिल जाते हैं और आप काम करने लगते हो, society अपने आप accept करने लगती है. So I think if we can do a lot of work at the ground, and especially the doctors who look at early intervention and tell them, कुछ भी है problem, please at least tell the parents they should come and see us. And if the parents see, and the only way is when stories like Era, Harish, other Karam yogis will go out, and I think Sir and I were discussing the other day, he came up with a brilliant idea that the day we will start celebrating the tax some of us are paying, and we are no more seen as becharas, oh ye to yehi kar sakte hain. I take a lot of pride when I say, I was perhaps one of the highest taxpayers within the fraternity, and why not? We need to redefine this image. All other things will automatically start to align. Thank you. So clearly parents play a big role, and institutionally there is a role, but I think it's a lot within the inner resilience as well that both of you all have downplayed very humbly. I do know that both of you all had challenges, right? Rahul, आपके जब फाइनल हुआ सेंट स्टीफेंस में इन दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की एक कहानी है कि आपको एडमिशन नहीं दे रहे थे, उसके बारे में जरा बताइए. So, interestingly, long back in time, I think with one of my cousins, I was struggling with a geometry problem. And he came and said, yaar, ye to, it's just a game. And probably kabhi-kabhi dimag ki wiring ho jati hai. Then every problem becomes a puzzle that you want to solve. I remember, I write blogs under something called the Vision Beyond Sight, and it's there. In my second year at St. Stephen's, I was a BA economics student. And मैथ्स का सबसी एंड मैथ्स सबसी इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट तो हम तो बिल्कुल शेरों के अंदर जाते थे. एग्जाम आएगा, विल जस्ट ब्लो द पेपर ऑफ. एंड आई वाज कमिंग आउट एंड आई वाज क्वाइट डल एंड आई एम लाइक, ओ गॉड, व्हाट हैज हैपेंड. पेपर खराब हो गया. एंड सो एग्जाम शीट इज लाइक दिस, राइट? इट्स एग्जैक्टली लाइक दिस. खोलते हो, बंद करते हो ऐसे. तो मैं सर नीचे करके मैंने कहा यार सबसे खराब हो गया, बाकी मेंस में कुछ नहीं होने वाला, हम बेकार में हीरो बनते. I was just about to take an auto, and that's another thing. While I come from a privileged family, I think like Ira said, my parents also never said कि बहुत गाड़ी मिलेगी, ये करेगा, खुद जाओ खुद करो. I was leaving and my friend looked at a paper and said, उसके हाथ में ऐसा पेपर था. And I said last page was blank. I said ये कौन सा पेपर है? इसे आज का पेपर है. मैं क्या बोल रहा हूँ यार, ये आज का पेपर है ही नहीं. I took out a paper and he said, boss तुम्हें BA economics की जगह BSc general का पेपर मिल गया. That's a blunder, right? As a person with disability, for every 1 hour of exam you get 20 minutes extra. Now I rushed back. My friend held my hand. He said, "चलो भागते हैं." We ran. 1.5 घंटा हुआ था, 2.5 घंटे बचे थे. 3 घंटे का पेपर था तो 1 घंटा एक्स्ट्रा मिला. We went there and they said, "Well, गलती हो गई, चिंता मत करो, हमसे प्रॉब्लम हुई है, नेक्स्ट ईयर देना." सर मैडम मतलब ही नहीं होता. Now I had 2 choices. The choices I had were, I could have given it up. I said, कोई बात नहीं, next year देखेंगे. They said, जितना भी है आप अभी पेपर दीजिए, हम अभी करेंगे. They said, are you mad? You want to take that decision? He said, yes. Took that exam. Rest is history. I had a brilliant score, and similarly, I think I was in final year, and thankfully उसी time पे सरकार बदली थी और हमारे प्रधानमंत्री के दामाद was our professor at college, and he was my invigilator. So final year, they slammed me. They didn't give my result out, and on the board it read later if necessary. We said, what is later if necessary? Of course you need your results. We ran in and they said this is a case of fraud. Like, what fraud? And why I said that PM son-in-law, because I said यार अगर PM के son-in-law के सामने fraud किया है ना तो ये बहुत बड़ी news है और अभी ओथ हुई थी. So we went. He said no, nothing like that. I went to the university dean, got my paper, and I still remember. It sounds like music to my ears till date. My principal called the dean and said, "Madam, पहले हम बच्चे नहीं लेते, जब लेते हैं और वो अच्छा करते हैं तो उन्हें परेशान बहुत करते हैं."
They took out the paper and it said a person with visual impairment cannot draw such diagrams. Now, first of all, I don't know how they got to know that I was a person with disability, because an examiner should not get to know what's happening. So they got me, they said, Rahul, देखते हैं इसको करते हैं. I said, कल Delhi School of Economics का result है and I need this, otherwise I'm out. They said, no, it's not possible. I said, madam, right here, blindfold me and I'm going to draw the diagram. And my dad's like, you're taking it as a joke. I said, we have to take heads on certain things. They got an handwriting expert. They got me cleared. We ran to Delhi School, and the director then, phenomenal person, he said, Rahul, abhi tumhara naam nikalne wala tha list se. And we were waiting for you because you stood first in the entrance exam. But, the whole thing is, one, it's our parents who give us that courage, that take the world heads on. And I'm constantly resonating with all the people here. I think I still feel we came from a very privileged background, but people who don't, if their families will stand strong and they say, look in the world eye to eye, you too can be the CXO, you too can be the secretary, you too one day could be a PM. I think this world is bound to change, and then we'll automatically get the courage to face the world straight eye to eye. Sorry, long answer. No, but I think it's very, very pertinent because we take a lot of this for granted. हम लोग ने कोटा कर लिया, बच्चों की एडमिशन हुई नहीं हुई, क्या फ़र्क पड़ता है पास हुए कि नहीं, क्या कर पाएंगे. बट आई थिंक जब कोई इंसान टॉप कर रहा है, वी आर अगेन जजिंग देम नॉट बाय व्हाट दे कैन डू बट व्हाट दे आर सपोज टू नॉट बी एबल टू डू. एंड आई थिंक दैट पर्क्युलेट्स इनटू वर्क एज वेल. ईरा, आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स वाज ऑफन कि हाउ कैन अ पर्सन हु इज डिसेबल्ड बी एन IAS ऑफिसर. वो लॉ एंड ऑर्डर कैसे संभालेंगे, वो लोगों को कैसे ठीक करेंगे, मतलब कोई उनको सीरियसली कैसे लेगा. बट यू शैटर्ड दैट myth. I'm told you're quite a tough officer. So a little bit about that. I think it's a journey of getting there and then actually executing day to day, living up to that. I think one good thing is obviously there are still a lot of people out there who do not think people with disabilities should be in the system or are capable. And one of the things is वो charity की तरह देखा जाता है that if you're given this, it's like a favor that is being done or a handout that's been given to you. So you're supposed to be happy with it and just stay within that boundary. But thankfully in my case, and I'll be very honest, had I not been rank 1, this would have continued. Because I see that happening around me subtly everywhere. But because I had proven that in the civil services examination, that went a long way in getting people to at least not obviously say that or obviously show that. So, what I have realized, and this is something that most children with disabilities would have done if they've managed to, come out of their houses and do anything in life, is that you have to at some point ignore the world and accept that the world is ignorant. Accept that the world does not understand. And वो होता है ना कि आपको पता है उनको समझ ही नहीं आएगा, so let it be. You do your bit, because the more you think about what others' opinions are, the more you allow those opinions to affect your actions, the way you work, you will never be able to work. And it goes for almost everybody, right? Even for women, if you allow the society to completely define your existence and define what you should be doing and how you behave, you don't get to get out of your house and get a job also. So I think for people with disabilities, that gets multiplied many-fold. At some point, you need to ignore what the world behaves and keep doing your bit. Because at some, after a bit, they will accept. So it does come into play when you're working. A lot of times, people will have that. But I think I've been lucky. I'm currently in a system which at least does not obviously do that. And I have gotten opportunities and roles, and I've had brilliant seniors who've supported and who've, kind of got me into those roles. And I hope they've been happy with how I performed. So I think the things that are resonating is that in sparks, change happens, right? कि एक जन ने लड़ाई की तो उसके लिए मतलब शोर शराबा नहीं हो, उसके लिए exception हो जाए. How do you make that systematic change, right? We're all here in this room, all committed to it. Some for a lifetime, some of us newer. But it's easier said than done. तो वो कैसे हो कि आपको 3 चीजें करवानी हो.
जो सिस्टम में जाकर एम्बेड हो जाए ताकि ये नहीं हो. And I understand it's a bit utopian क्योंकि women for the last 40 years we've been still trying to fight it, but we are a lot better today than we were. So how do we do that? So what would be your advice? 3 things. It could be for the system, it could be for individual, it could be for parents, it could be for higher education, it could be as easy as start talking to each other. Whatever it is, the three things from your end. Should I start? Go ahead. Okay. I think the first is when a child with disability is born, there needs to be a counseling system set up across the country, a network within hospitals, and today with online supports, online systems, we can actually have online guidance and support groups wherein parents kind of help each other out. And the hospitals themselves, if they can kind of send those parents to that, connect them to that, that goes a long way. Because I've seen that personally in a lot of places, especially for children with mental disabilities, the parents are completely lost. And more lost than you can imagine, because this is not something that anybody imagines when they're going to have a child. When you think of having a child, you always imagine your child will be perfect and your child will be able to do all these things in the world. But when that child is born and you suddenly find out that this is what there is something wrong with your kid, it's a shock, it's a trauma that you go through. And if we can have those PTSD sort of counseling groups which tell you at each stage how do you deal with your child. There'll be behavioral issues, there'll be societal issues, there'll be financial issues, and there'll be system issues wherein how do you send them to schools, what kind of tools will they need. If we can one have that. Secondly, inclusive education, especially in the primary levels, because when you grow up with a child who's a child with disability, you kind of get used to and accept that child as they are. I never got bullied because I went to the same schools as all my classmates. So they never saw my disability. A lot of times they would actually be surprised in their heads, oh, you have a disability. It's sort of like a realization that they get. So that's another thing. If we let children grow up together from those learning years, that sort of normalizes being different. That sort of tells them all that, okay, this is what everybody should be doing. Thirdly, and I think that's something that was already discussed, and I'm so glad sirs are thinking about it, which is a training program for people who deal with public service, public as such, which includes your government servants, which includes your teachers, which includes your hospital staff. If you can have small courses which kind of give you that input of how do you deal with it. Like, I'll give an example. When I was director education, I trained all my teachers of my 700 schools in MCD, North MCD, about disability. I did a course, a short workshop, one-day workshop for all my teachers. Thankfully, it was COVID, so we could do online and it was cheap. But when we did that, the number of kids who started getting registered into my schools, children with disabilities who used to be turned away, that increased manifold. So, and I did another thing, I'm just putting this out there, I did it on transgender children as well. And that again made a huge impact. So if we can, schooling, primary education is where it all starts. So if we can normalize that, we'll go a long way. Thank you. Rahul? I think Ira quite well summarized what needs to be done at the policy level, since I've been more of a corporate and a capitalist person. I think some of the things that needs to be done, at least at the corporate level, there has to be a large, significant advocacy, whereby there have to be mechanisms where corporates start seeing this as a right asset. Now, of course, with both the ladies on my accomplished ladies on my right and left, long time to have that gender representation, whether at the senior management or at the boards of these companies. But I think probably it's time now that we need to start where corporates need to recognize that this disability or Divyangs is an important number. And while I'll not get into the number, but I think there are enough reports that suggest that it's a significant number. That this number needs to be represented. And how democratic this world could be, I personally met a company which does hiring for CEOs that constitute boards, and when it came to them for hiring a person with disability at a leadership position, they start trembling. But
if there is any way that these corporates could be incentivized, then maybe they'll start taking it a little more seriously. Now, whether it has to be an incentive structure or penalty structure, the policymakers, all of you are much better equipped. Second, it's important that the infrastructure and the physical infrastructure need to be taken very seriously in our country. With all due respect, I really struggle sitting in this room right now. I think the way this lighting is done in this room, it's troubling. And it could be done better. Now, when and I'm quite well traveled. I've traveled across 38 countries. It pains me when I go to a five-star hotel in our country, which is led by a same brand who runs this in the US and in UK. They will never dare to put a shiny staircase without a marking on it. What gives them the dare to leave our country with that sort of an infrastructure, which means they don't care. Either they don't care, or as government, we are not able to put the right pressures on them. The day these people start seeing these pressures, I just took my mother to a hospital 2 days back. Now, thanks to the kind of people I'm interacting with Nupur, I'm now getting to learn a lot of things besides visual impairment. The ramp that was done, there is no way a wheelchair could have gone on that. But optics था, audit में निकलता, fail हो जाता, किसी ना किसी तरीके से setting हो, and it's a mega hospital chain which is doing that. AICTE auditorium, a brand new auditorium. It's called All India Center for Technical Education. I think it trains it imparts the technical education to all of us. There is no way you can walk on those staircases. The stair कोई ऊपर है, कोई छोटा है, कोई नीचे है. I think a normal person will also do. So I think if this physical infrastructure could be settled, I've spent 5 years in London. It was so easy for me to walk with my son on the road, and now I'm so happy when I think it's my third opportunity to meet sir. There is now somebody at the top who is trying to drive this vision the right way, who is now not talking about this as a charitable mission. And I think we all sitting here, we getting an opportunity to put our voice here, is a reflection that we are ready to hear, we are ready to implement. I really don't have much to say, but beyond this, but I think if the corporates can start seeing the benefit, and again, people need to run it by merit. I mean, if Ira is getting up the ladder, it's because she's able to demonstrate. If I could become the youngest SVP in Access, because I was contributing to the PNL. But we need more. Maybe we can celebrate these corporates. Maybe we can celebrate and just something coming off my mind. We have President's Award for Divyangs. Can there be awards which can felicitate, let's say, the teachers, the doctors, and the parents? Maybe if these people will be seen, it will take time. It's not an overnight journey. It might take us 10 years, 15 years, 20 years, maybe a full lifetime. But if we start, we will reach there, and clearly there is a lot of progress that we can see. Thank you. Thank you, Rahul. I think there were multiple things that they've said. One is how empowering it is that Rahul says, I took my mother to the hospital. It's amazing that, this is something, if we were to imagine a visually impaired taking care of someone else, is something that doesn't come in our thought process when we do our policy making, our solutioning, even as a non-profit. And I think that's the ambition, right? That we have to shift our mindset to be able to think that an era can be a big boss and will be a phenomenal one, maybe sitting where Rajesh Agarwal sir is sitting in a few years, putting danda on us to, ki kyun nahi badla. But I think those are the ambitions. Are we able to match up to what they believe they can do and create that environment? So for that, thank you very much for opening our eyes and giving us the vision. And I will hand it over to the moderator. Thank you so much. Indeed, they do deserve a big round of applause. And once again, thank you so much to our both the speakers and moderator. And with this, I would now request our director, sir, Vineet Singhal, sir, to kindly felicitate our both the speakers, Mr. Rahul Gupta and Ms. Ira Singhal.
I again request you, sir, to kindly felicitate our moderator, Ms. Nupur Junjunwala, ma'am. Thank you, sir, and thank you once again to our both the resource person, speakers, and the moderator. With this, we are now going to start the second session, which is a panel discussion based on building the pipe, inclusive higher education for students with disabilities. And in this session, our speakers are Ms. Suhana Bhutani, who is a second year medical student from Lady Hardin Medical College. She has dyslexia and her journey in self-advocacy hasn't been easy, but with the support of her professor and the administration, she was able to make through. Welcome, Suhana Bhutani ji. We have with us Mr. Shubham Garg, who is Scrum Master at Cisco. And Shubham is person with visual impairment, and he is BCom Honours graduate from Keshav Mahavidyalaya, University of Delhi. He is a certified Scrum Master, currently working with Cisco as a partner employee. And he is a recipient of Dhirubhai Ambani Scholarship and Young Achiever Excellence Award by HCL and Dainik Jagran. He also represented India and received silver medal at Global IT Challenge for Youth with Disability in 2017 in Vietnam. We welcome you, Shubham Garg. We also have Ms. Reena Gupta, Director, Office of Learning Support, Ashoka University. Ma'am is a clinical psychologist and a certified education therapist. She is the founding director of the Office of Learning Support, Ashoka University, to support students with disabilities and other neurodiverse needs such as dyslexia, with the goal of expanding the scope of neurodiversity and disability management in higher education in India. We welcome you, ma'am. The moderator of this session will be Ms. Madhubala, CII IB DN Network. Born and raised in New Delhi, she studied through an integrated education system, and National Association for the Blind Delhi was her resource school. After graduating, she worked as a software tester for JAWS for Windows, a screen reading software with Freedom Scientific. She worked with Concentrix for 17 years as a learning and development professional, and she is presently working with Amazon in the space of DEI and an active member of CII IBDN. Ma'am, we welcome you. And she has also been recognized as a role model on the International Day of Persons with Disability in 2009, felicitated by the Honorable President of India. She also received Award for Excellence 2016 by NAB Delhi, Award of Excellence by National Institute for the Visually Handicapped, and Neelam Khurshid Kanga Award in 2007 and 8 by National Association for the Blind. Over to you, ma'am, to take over the session, please. Thank you so much. Thank you. It's absolutely a delight to be here and meet wonderful people like you all who I'm sharing the dice with today. और इस पैनल डिस्कशन की शुरुआत करने के लिए मैं ये कहूँगी कि अभी हमने सक्सेस स्टोरीज के बारे में सुना और हम दो चैंपियंस से मिले और इन चैंपियंस ये चैंपियंस जो हैं ये बॉर्न चैंपियंस नहीं है. ऐसे नहीं होता कि मुबारक हो डिसेबल्ड हुआ है लेकिन ये चैंपियन है, ऐसा होता नहीं है. अभी हमने समझा कि इन चैंपियंस को बनने में बहुत कुछ जाता है और वो अर्ली एजुकेशन में जाता है. अर्ली एजुकेशन में ही नहीं जाता, हायर एजुकेशन में भी जाता है. पेरेंट्स बहुत स्ट्रगल करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं और एजुकेशन सिस्टम में लाते हैं और उसके बाद हम जाते हैं कॉर्पोरेट्स में, गवर्नमेंट्स में अपने लिए रोज़गार लेने. और वो भी एक कई लेवल्स पे स्ट्रगल होती है. क्यों होती है? क्योंकि कई लेवल तक हम एक उसमें फंसे हुए हैं, चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं. जो चक्रव्यूह है हम और तुम, एक सोसाइटी और डिसेबल्ड. तो जो डिसेबल्ड है वो सोसाइटी का पार्ट है और कैसे हम अच्छे तरीके से एक इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम बनाकर हम आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे और हम अपने पैनलिस्ट से बात करेंगे. तो सुहाना, शुभम, मैं आपसे सबसे पहले बात करना चाहूँगी. आई वांट टू टॉक अबाउट want you to share with everyone the kind of education system that you're going through.
आप दोनों के अपने challenges रहे हैं disability के साथ, तो challenges के साथ कैसे आप अपना higher education कर रहे हैं? सबसे पहले सुहाना आप बताइए, with your disability आप इतनी interesting subject में expertise हासिल कर रही हैं, जो सोच नहीं सकते शायद कि एक disabled मेडिकल सेक्टर में जाए, तो कैसा रहा आपका जर्नी अभी तक का? क्या challenges आपने face किए? Thank you. So I've always wanted to become a doctor, so it was never a question or a doubt about like if I want to do it or don't want to do it, just because I have a disability. So my experience in college has overall been okay. There were a lot of challenges because I have a invisible disability, so people don't understand. सुहाना थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे, उधर भी लोगों तक आवाज नहीं जा रही। सॉरी, आपको थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ेगा। माइक दे दो। Do you need a mic? वो माइक वाला नहीं, वो वाला नीजन का है। So I have an invisible disability, so a lot of people in college don't understand what exactly the basic anatomical and the physiological problem I have. So much so that like when I went to ask for extra time, which according to my disability I should get in every exam, the first question I was asked was, what is the basic problem you have? And it is very difficult to explain even doctors, which is very sad, because they teach us subjects that include neurodiversity, and but the medical registrar was very helpful, and I'm very happy to report that I got extra time in my first year professional exam, and I got an hour extra for my 3-hour paper. Okay. And otherwise, I think I don't see my disability as a barrier to do something. Right. So to become a doctor, I think anybody can become a doctor. A person who has disability, who doesn't have a disability, you just require two basic things, which is hard work and persistence. So basically interest होना चाहिए डॉक्टर बनने के लिए या कुछ भी बनने के लिए. When you have that interest, when you have that hard work, and you persist to get what you want, you get it. It is actually very difficult in my experience as well. You know, when we are students, we are selecting certain subjects. It's not that easy कि हमारे ability से पहले हमारी disability को देखा जाता है. बहुत मैं वैसे बहुत बड़ी और बड़ी नहीं हूँ, मैं यंग ही हूँ. बट जब मैंने पढ़ाई करी थी, मेरा बहुत मन था कि मैं साइकोलॉजी पढूं. मेरे पास मार्क्स थे, मेरे पास जो रिक्वायर्ड इंटरेस्ट था वो था, लेकिन मुझे साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट हायर एजुकेशन में डिनाई किया गया. और फिर मैंने इंग्लिश ऑनर्स पढ़ा, जो मेरा नेक्स्ट बेस्ट चॉइस था. बिहेवियर के बारे में सीखना था मैंने, वही आपने जो बोला ना, परसिस्टेंस होनी चाहिए, तो वो मैंने अपने करियर में आगे आके सीखा. लेकिन आई थिंक मैं आपकी बात से ये बात ज़रूर ड्रॉ करूँगी कि एजुकेशन सिस्टम्स में हम इतनी अवेयरनेस ला सकते हैं शायद कि किसी डिसेबल्ड को अपने राइट्स के लिए बार बार बोलना ना पड़े, मुझे 1 घंटे की एक्स्ट्रा की ज़रूरत है, मैं ये सब्जेक्ट ले सकता हूँ. शुभम, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? Your challenges, your experience. Yeah. So first of all, thank you very much everyone for giving me opportunity to speak. So challenges तो थे. Actually, I was not a person who was born blind. I lost my vision at the age of 6. I contracted Stephen Johnson syndrome due to medical negligence by the doctor. So after that, with the support of my family, so उनका क्या होता था कि अपने आप को अलग कंसीडर नहीं करना है. आपको हमेशा मतलब जैसे सोशल गैदरिंग्स होती हैं या लेफ्ट से लेफ्ट में आई. सो जैसे जो भी सोशल गैदरिंग्स हो रही हैं, वहाँ लेके जाना, वेदर सोसाइटी इज आस्किंग माई पेरेंट्स कि हे व्हाई यू आर ब्रिंगिंग हिम एंड यू नो इट वुड बी अनकम्फर्टेबल फॉर हिम, थिंग्स लाइक दैट. तो क्या होता है कि वहाँ जाने से, धीरे धीरे इंक्लूड होने से क्या होता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है. यू लर्न हाउ टू नेटवर्क विद द पीपल instead of getting into the community that okay you are a blind, so deep dive get into the blind community, interact with them, you know, and learn things from them. So उससे हुआ क्या कि I learned how to network with the people. So this helped me to establish, you know, good relations with my peers, with my teachers, and also they also saw me like a person who is also equivalent to them. Like उनको कुछ extra efforts करने की ज़रूरत नहीं थी. But yes, initially challenges होते थे.
when I contracted this syndrome, so I was studying in Kendriya Vidyalaya. So my headmaster said कि हम ये मतलब तुम्हें कुछ disease हुई है, you are a blind, we cannot teach a blind. So I was like कि why am I not capable or something like that. So after a lot of persuasion, she agreed, okay, I'll take a skill test, and then I'll allow him. So post that, I was being allowed admission, and then I continued my studies. Similarly, what happens, right? Uh, like for example, you get a scribe to write your exam, right? And he is generally a one qualification below your qualification. For example, you are writing the exam for class 10th, he will be the student of class 9th. तो होता क्या था, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एग्जाम में लिखना है एक्स स्क्वायर, तो बच्चा क्या होता था, लिख के आ जाता एक्स और फिर आगे स्क्वायर की स्पेलिंग. तो अब क्या होता है कि अपने जो टीचर्स होते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जब आप बोर्ड्स में जाते हो या और कहीं जाते हो तो so you will face the marks deduction, right? And you cannot bear that because you know कि आप उससे अच्छा कर सकते थे, but it doesn't happen, right? So that was one more challenge. Another was after learning Braille, I found out this assistive technology about JAWS and all these things, right? So मुझे लगा कि मुझे इस चीज़ में ही जाना है. मतलब आई सॉ कि उस टाइम पे क्या होता था, खाली एआई के अंदर एप्पल के अंदर सीरी ही थी जो मतलब एक एआई था जो काम करता था उस टाइम तक. सो आई सॉ देयर वाज सम गैप. सो आई वाज लाइक कि ठीक है, मुझे इस डोमेन में काम करना है. आई विल ऑप्ट फॉर साइंस स्ट्रीम एंड गो अहेड. But what happened, even after scoring 9.6 in my class 10th, I was denied admission in science subjects. So I took it as a challenge. I knocked the doors. I also reached out to education department also, but unfortunately I didn't get the justice at that time. Even I argued, right? Our honorable prime minister, our education ministers were doing a lot on the top level. Then still how I can't be denied on the ground of that. But still, even though my school, after all odds, allowed me the admission, I was not having much finance to support my science studies, because unless you prepare for JEE mains or the hefty coaching payments of these like these NEET examination, you cannot strive in the competition. Sure. So what happened at that time, people were telling ठीक है, एक काम करो, गवर्नमेंट में कोटा होता है तो तुम आर्ट्स ले लो और कोटे से लेके जॉब कर लेना. So no denial that art is art is a very strong or very tough subject. I would say it is not like it is disrespected or something, but I was like इस डोमेन में तो नहीं जाना है ऐसे. इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए ना, इंटरेस्ट की भी तो कोई बात है. करेक्ट. सो क्या हुआ कि मेरी आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, तो बिजनेस शुरू से था तो ब्लड के अंदर ही. तो I thought कि ठीक है, let's try commerce. My uncle was also running a coaching institute, so I went to there and I thought कि AI के अंदर मैं बाद में किसी तरीके से जाऊँगा. For example, trying for higher education in AI after pursuing my graduation or something like that. So that is the goal. And yes, I pursued that because now I am in a technology sector, even though I am a commerce graduate. Okay. Congratulations. So, जो challenges शुभम ने बताए वही आते हैं कि नॉक करना पड़ता है दरवाजे पे, और अपने चॉइस के सब्जेक्ट्स, चॉइस का जो हम पढ़ना चाहते हैं कई बार वो नहीं मिलता. कई बार एक्सेसिबिलिटी शायद सब्जेक्ट्स में भी ना मिले, शायद मटेरियल ना मिले. इस तरीके के चैलेंजेस आपने फेस किए, राइट? और ऐसे चैलेंजेस काफ़ी हद तक ओवरकम कर रहे हैं अशोका यूनिवर्सिटी में. मैम आपसे जानना चाहेंगे रीना जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका फ्रॉम सेटिंग इट अप टू लीडिंग इट? डू पीपल विद डिसेबिलिटीज रियली बेनिफिट फ्रॉम इट? व्हाट्स द स्टोरी? When I started this Office of Learning Support at Ashoka, आसान नहीं था क्योंकि उस टाइम पे इनविजिबल डिसेबिलिटीज़ को समझने वाले नहीं थे, स्पेशली इन हायर एजुकेशन. क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज़ वाज मोर इन इनविजिबल डिसेबिलिटी सच एज डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया. तो हायर एजुकेशन को ये बताना कि ये भी एक रियल कंडीशन है और इस चीज़ को भी सपोर्ट करने की ज़रूरत है बियॉन्ड स्कूल लेवल. कि मैंने अब वो तारे ज़मीन पर मूवी आई थी, उसके बाद स्कूल सिस्टम ने तो काफ़ी इस चीज़ को इंटीग्रेट कर लिया था. तो अब उस चीज़ को अगर यूनिवर्सिटी में करना है तो ऑफ कोर्स इन द बिगिनिंग इट नीडेड अ लॉट ऑफ कन्विंसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग.
But as Suhana also mentioned, you need champions. And fortunately, I got the champions in Ashoka University. तो वो चैम्पियन, एक चैम्पियन वन ऑफ द फाउंडर्स में थे और एक चैम्पियन सीनियर मैनेजमेंट में थे. बट सिर्फ एक या दो लोग तो मैनेजमेंट नहीं बनाते हैं. देयर आर मल्टीपल पीपल, राइट. उनमें से बहुत लोगों के क्वेश्चन थे कि अगर वो इनविजिबल डिसेबिलिटी है, अगर उनको रीडिंग राइटिंग में डिफिकल्टी है या मैथ में डिफिकल्टी है, तो वो अशोका में कैसे करेंगे? बिकॉज अशोका इज अ वेरी एकेडमिकली रिगरस यूनिवर्सिटी, राइट. तो मैंने उनको सिर्फ ये बोला कि अगर आपके यूनिवर्सिटी में आज 500 बच्चा है, दैट वाज एक्चुअली बैक इन 2015 और 2014 में यूनिवर्सिटी शुरू हुई थी. 2015 जनवरी में आई टोल्ड देम कि अगर आपके पास आज 500 बच्चा है, मैं आपको बोल सकती हूँ कि कम से कम 50 बच्चे आपके यूनिवर्सिटी में हैं जो आ चुके हैं, मेरिट पे आए हैं, और ये बच्चे डेफिनेटली इनमें इनविजिबल डिसेबिलिटी है. तो जो उस टाइम वहाँ पे डीन थे, डीन ऑफ एकेडमिक अफेयर्स, उनको ये बात समझ में आई एंड ही सेड कि रीना, आई कैन टेल कि मेरी ही क्लास में कुछ बच्चे हैं एंड आई वांट यू टू टेस्ट देम, असेस देम. वो सब वहाँ से शुरू हुआ और ऑफ कोर्स इट्स अ लॉन्ग स्टोरी. 2015 में शुरू हुए थे इनविजिबल डिसेबिलिटी के लिए और आज आफ्टर 7 years 8 years इन फैक्ट आज हम हर डिसेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं. सो स्टार्टेड विद डिसलेक्सिया. उस टाइम पे बहुत लोगों को, बच्चों को हमने असेस भी किया. 90% बच्चों को डिसलेक्सिया था, जिनको मैंने खुद वहाँ अशोका में असेसमेंट किया. बिकॉज जो मैं बता रही हूँ ना, डीन ने कहा कि हाँ कुछ बच्चे हैं, उनकी फिर हमने असेसमेंट करनी शुरू की और 90% को डिसलेक्सिया था. They got through Ashoka, right? So वहाँ से शुरू होकर then we of course had our first student with 100% visual impairment, जो कि मेरा exact area नहीं था, but हमने कहा कि ये भी student है, इस condition को भी हमने support करना है. तो वहाँ से शुरू हुए और वो student math करना चाहता था, math and computer science. वो बच्चा पहले DU में पढ़ा कुछ महीने, जहाँ पे उसको पहले बोला गया कि इंग्लिश ले लो क्योंकि मैथ साइंस थोड़ा मुश्किल होगा, बट ही वाज अ वेरी कमिटेड टुवर्ड्स साइंस स्टूडेंट. सो ही सेड कि नहीं, मुझे साइंस ही पढ़ना है, मैथ ही पढ़ना है. एनीवे, सो ही गॉट इनटू अशोका आफ्टर अ फ्यू मंथ्स एंड वहाँ से हमारी जर्नी दूसरी डिसेबिलिटीज के साथ शुरू हुई. फिर अशोका में 100% हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को हम लाए. फिर हम व्हील चेयर यूज़र्स को लाए और जो लास्ट हमने अभी जो 4 बच्चे जो हमारे पास हैं, दे आर मॉडरेटली ऑटिस्टिक, एक्सट्रीमली ब्राइट. हमें उनको कॉग्निटिव एकेडमिकली कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं करनी है, बट क्योंकि अशोका इज़ अ रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी, तो ये सारे स्टूडेंट्स वहीं पर रहते हैं, एवरीबडी. सो आज अशोका में अगर 2800 स्टूडेंट्स हैं तो सारे स्टूडेंट्स वहीं रहते हैं. सो एवरी स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट, एवरी स्टूडेंट ऑन अ व्हील चेयर, एवरी स्टूडेंट विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, एवरी स्टूडेंट विद ऑटिज्म, with dyslexia, they all live there on the campus. और आपने उन्हें अलग अलग बाल्टियों में नहीं डाला, बकेट्स में नहीं डाला कि अरे ये इनकी ये डिसेबिलिटी है, ये अलग ही रहो, वो अलग ही रहो. वो क्योंकि देखिए इसीलिए जब हमने अपने ऑफिस का नाम भी रखना था, तो आई वॉज अ लिटिल बिट केयरफुल देयर, बिकॉज डिसेबिलिटी सर्विसेज का नाम लेके इनविजिबल के लिए अगर हमें करना था, तो वो हम पहले से ही एक स्टिग्मा बना रहे हैं, एक टैबू दे रहे हैं कि डिसेबिलिटी सर्विसेज है. सो आज ये ऑफिस सिर्फ डिसेबिलिटी को नहीं, हम इसलिए लर्निंग सपोर्ट हम कहते हैं, ताकि सारे बच्चे जिसको कोई डिसेबिलिटी नहीं भी हो, इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर भी हो, किसी को जनरली एकेडमिक्स में इशू आ रहा है, वो हमारे ऑफिस में आ सकता है. बेसिकली कोई भी डिफिकल्टी है, आइए. यस. सो वहाँ से हम स्टार्ट हुए थे और ये है आज हम कि हम सारे डिसेबिलिटीज़ को सपोर्ट कर पा रहे हैं. और यस, चैम्पियंस चाहिए, और अगर इसलिए गवर्नमेंट अगर ये रोल ले सकती है कि वो चैम्पियन बने इस चीज़ के लिए. किसी ने भी बोला था कि अभी किसी ने कहा था कि लोग हेल्प करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, अवेयरनेस की ज़रूरत है. तो वो अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन हम करते रहते हैं, इवन इन द यूनिवर्सिटी, बिकॉज ये प्रोफेसर्स आते हैं, प्रोफेसर्स को हम
ट्रेन करते हैं या उनको बताते हैं, वो फिर चले जाते हैं, कोई और आता है, Right. स्टाफ चेंज हो जाता है, स्टूडेंट्स चेंज होते रहते हैं. So awareness, sensitization is a regular feature. It has to be a regular feature. बेसिकली कल्चर लेवल पे आना ज़रूरी है. जब ये कल्चर बन गया, जैसे हमारे हर फैमिली का कल्चर होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है, हमारा कंट्री का कल्चर है, वैसा अगर हमारे कल्चर में ये इंक्लूजन आ जाए, ये प्रॉब्लम तब काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है. और हम कहते हैं कि एजुकेशन, हम कई बार इस बात से स्ट्रगल करते हैं कि पाइपलाइन नहीं मिल रही. नौकरी देना चाहते हैं लेकिन डिसेबल्ड स्टूडेंट्स या लायक रोजगार के लिए लोग हैं ही नहीं. लोग बनाते कौन हैं, बनते कहाँ से हैं? इन्हीं एजुकेशन सिस्टम से आते हैं. जब हम यहाँ पर इंक्लूजन प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंक्लूसिव एक्सपीरियंसेस दे सकते हैं, तभी हम डिसेबल्ड एम्प्लॉयज़ को आगे ला पाएंगे, वो चर्न होगा. शुभम, आपने DU से ग्रेजुएशन किया है और कैंपस प्लेसमेंट भी यूनिवर्सिटीज़ से ऑफर होती है, तो आपका उस सिलसिले में क्या एक्सपीरियंस रहा है, कैंपस प्लेसमेंट फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज़? So when we talk about कि प्लेसमेंट्स अगर कॉलेज से होती है ग्रेजुएशन लेवल पे, so these days corporates don't look for graduates, they look for PG students. When I was looking for the opportunities, people were telling on my face, BCom is just like a birth certificate that you need to show. All right, and if you are an IM student, then straight away I can offer you an internship. Okay. So I was like, this is not something that we can go with. Also, if we talk about specifically about my college, so I belongs to Kesha Mahavidyalaya, so it's an off-campus college. Generally, what happens is कैंपस प्लेसमेंट का क्या होता है, अगर आपके नेटवर्क प्लेसमेंट कमेटी के साथ अच्छे हैं, then you will be getting into placement. Otherwise, your resume will never get to the organizations. In case it reaches to the organization, so problem ये होता है कि corporates भी उसको ऐसा नहीं है कि अलग अलग करके पढ़ सकते हैं, या they can deep dive into a resume. So they filter out on the basis of different tools. So क्या होता है कि वहाँ पर resume आपका पहले ही filter out हो जाता है. क्योंकि अब आप ग्रेजुएशन लेवल पे हो, ठीक है, दे आस्क फॉर एक्सपीरियंस फॉर 2-3 years, एंड व्हेन यू गो टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर आस्किंग फॉर एक्सपीरियंस, दे आर लाइक कि एक्सपीरियंस लेके आओ. तो एक्सपीरियंस लाए कहाँ से, पहले एक्सपीरियंस मिलेगा तभी तो आएगा ना. So that's the thing. So campus placements really needs to be corrected or rectified. So we have to put more emphasis on कि people with disability को हम reservation तो दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद उसका आउटकम निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इनफैक्ट CI से, जैसे मैं IBDN को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रही हूँ, IBDN इज़ अ नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो साथ में मिलकर कंपनीज काम करते हैं सेंसिटाइजेशन के लिए, एडवोकेसी के लिए, पीपल विद डिसेबिलिटीज़ के एम्प्लॉयमेंट के लिए. इनफैक्ट रोज़गार से रिलेटेड यूथ फॉर जॉब के साथ ऐप भी बनाया है, और बहुत सारे और भी ऐप्स हैं. रोज़गार सारथी ऐप भी है, और इतने सारे ऐप्स के ज़रिए प्रयास चल रहा है कि पीपल विद डिसेबिलिटीज़ सेक्टर कंपनीज़ के साथ जुड़ें और नौकरी ले पाएँ. और बहुत से PWDs एनरोल भी कर रहे हैं इन प्लेटफॉर्म्स पे, कंपनीज़ भी इन पोर्टल्स पे एनरोल कर रही हैं. लेकिन आई थिंक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कैंपस प्लेसमेंट्स के अपने स्ट्रक्चर को फिक्स करें, जैसे शुभम ने कहा, और हम उसमें ये लेकर आएँ कि एक्सपीरियंस हम प्रोवाइड करें पीपल विद डिसेबिलिटीज़ को, ट्रेन एंड हायर मॉडल्स के ऊपर और काम किया जाए. और क्या कर सकते हैं आप तीनों के, क्या सजेशंस होंगे? मैं इस सेशन को वाइंड अप करने के लिए आप तीनों के सजेशंस चाहूँगी फॉर द गवर्नमेंट, फॉर कॉर्पोरेट्स, कि हम क्या करें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि एक सॉलिड पाइपलाइन बने ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज़, और हम ये ना कह पाएँ कि यार हमारे पास नौकरी है लेकिन लोग नहीं हैं. इस चीज़ को कैसे सॉल्व करें? रीना मैम, आपसे शुरुआत करते हैं. It's a long process for sure, but it has to start from school level, right? From school to college to placements. It has to be a seamless process. उस seamless process को coordinate करने के लिए कोई चाहिए, वो champion चाहिए.
तो स्कूल लेवल पे बच्चों को, क्योंकि क्यों क्या होता है कि अगर हम विजुअली इम्पेयर्ड को लें, उसमें चैलेंजेस ये होता है कि उनको बोला जाता है कि 9th के बाद आप ये सब्जेक्ट्स नहीं कीजिए, आप ये साइंस मत लीजिए, आप मैथ नहीं लीजिए, क्योंकि स्कूल्स के पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं कि वो ब्लाइंड बच्चों को साइंस करना अलाउ करें। ये बहुत जगह बहुत बार आता है। और हमारे पास अभी अशोका में अगर मैं बोलूँ 4 स्टूडेंट्स हैं ब्लाइंड, चारों साइंस कर रहे हैं। अच्छा। उनमें से तीन है जो कि कंप्यूटर साइंस और मैथ कर रहे हैं, और एक 4th है जो इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस कर रहा है। तो सिर्फ 4 क्यों हैं? होने तो बहुत सारे चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कि फिर हिस्ट्री कर रहे हैं, जो अगर वो उनकी मर्जी के खिलाफ, वो अगर साइंस करना चाहते हैं तो उनको स्कूल से ही उनको वो जो हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है कॉलेज रेडीनेस प्रोग्राम, वो इसीलिए किया कि सारी डिसेबिलिटीज, पेरेंट्स, प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, एवरीबडी हैज टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग देम फॉर हायर एजुकेशन much earlier. Class 11th 12th is too late, and when they are in higher education, then they have to be prepared to be future ready, so that they can be hired by the industry at the same level, at their at their merit. Not कि कि अच्छा ठीक है आप disability quota में आते हैं तो आपको 4% 5% में है, that of course helps, but it has to go beyond that. It has to go beyond that, and there is a chain. This chain somebody has to coordinate, and the government is in the, of course, is in that position, which can coordinate this, which can actually be that thread that can go from school to higher education to the industry. वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक हम लाइफ स्किल्स स्कूल लेवल से सीखना शुरू करते हैं, और वहीं से अगर इसकी शुरुआत हो जाए एक इंक्लूजन लेवल पे, इंक्लूसिव लेवल पे, अलग अलग लाइक आई सेड बाल्टियों में नहीं डाल के हम अगर करा सकें तो बहुत ही बढ़िया होगा। एंड मैनी यूनिवर्सिटीज़ लाइक योर्स शुड कम अप, मैनी centers, learning centers like yours are required. Thank you. Suhana, what about you? I don't have many suggestions because I'm still in college, but I would just like to say that early intervention really helps somebody to train yourself to deal with content, especially when you're doing something like medicine, because there is a lot of content, and children who don't have learning disability, they are struggling. Right. So you are comparing yourself to them. And you need to learn how to build strategies, how to deal with so much content, and there's a huge lack of awareness. Is there a mindset shift that's required, maybe in students, teachers? What do you think? Major mindset change, because I feel even professors, I'm talking about people who have done medicine, who have studied these subjects and who have learned about like neurodiversity, they themselves don't understand what it is. I remember a recent incident. This teacher, she's really helpful. She helped me get extra time. She helped me, but she at the end of the day told me that you need to learn how to, spell, like get your spellings correct. Okay. And I was taken aback because I was like, how can I do that? You're telling a person who can't walk to, who's in a wheelchair to walk. How can you tell me to read? It's the same thing. Right. There is a huge lack of awareness. Right. So I think like maybe an awareness, sensitization, the intent is there, but shaping that intent and making people aware is what is required, is what I get from you. Thank you. Shubham, your thoughts? Yeah. So I think first would be, as one of the gentlemen also said here, sensitization is required, right? So sensitization should be done not only for the educational system but for the corporates, for the society as well, so that they understand, and make that person feel inclusive in the system. When they will feel inclusive, they'll able to thrive. That is number one. Another is policies are on the top level that are already their government is doing a lot, but they are not getting implemented at the bottom level at some places. For example, there are many schools that allow people with disability to study there. For example, when you will see near RK Puram, since NAB is there, so they are aware with this thing. So that awareness need to be created, that no special resource, not much resources are required, I would say. If you will have an intent, then definitely you can employ people or make them, study as well. That is another.
Last, about the corporate sector, I would also say, when we see the opportunities for the people with disability, you will see generally 15, 20K, the jobs of 15, 20K. So they will be offered, for example, for the administration job, for some basic things, right? That need to be rectified. For example, for the BCom, when I was looking for the BCom honor or job on the basis of BCom honors, right? So data entry job was only there. However, there are multiple domains that can be accessed, right? And with my intent and with my intent to do thing, I was able to make it too. But still, there are many people who are struggling, who are not able to find the right mentorship, right guidance to reach there, right? In fact, in the big business schools, right, even after qualifying for the opportunities, companies tell them on their faces, even after having D&I policies, that see, you are qualified, but we cannot employ you for now, because so these are the things. So And then we say we are not ready we are because not we ready. are not ready. Yeah. So that I feel if again it come back to us also, right? We people with disability should also come out, and instead of asking, hey, give me this, give me that, we should also equip ourselves that let's do this, instead of just asking for everything. Thank you. I think to sum all of this up, I would say, जैसे अभी शुभम ने कहा ताली एक हाथ से नहीं दोनों हाथों से बजती है, तो हम सब पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है एकजुट होके कोलैबोरेट करने की, और हम अपने स्किल सेट्स को निखारें, हम अपने लिए एडवोकेसी करते रहें, और कंपनीज और NGOs, गवर्नमेंट, हम लोग एक सेंसिटाइजेशन की एक तरीके से मुहिम अगर छेड़ सकें, और जिस मुहिम में हम ये कोशिश करें कि हम आप और हम का जो ये गैप है, जो डिवाइड है, उसको ब्रिज करके मल्टीपल स्टोरीज बताएं, सिर्फ एक लेंस से स्टोरी ना देखें. अभी तक कई जगह पे स्टोरी क्या चलती है, अगर कोई विकलांग है, मुझे कोई मिले तो मेरा नाम ही सूरदास पड़ जाता है, मैं ही सूरदास हूँ. तो वो एक सिंगल स्टोरी नाम बन के, और क्या स्टोरीज है. मधु एक सिटीजन भी है, एक टैक्स पेयर भी है, एक मदर भी है, एक DEI प्रोफेशनल भी है. वो सारी स्टोरीज अलग अलग लेंस से हम सब एक दूसरे के बारे में देख पाएँ, सोसाइटी को दिखा पाएँ, और उसके बेसिस पे फिर हम अपना एम्प्लॉयमेंट पूल बिल्ड कर पाएँ, और सबको एक कॉमन लेवल पे नौकरियां दिला सकें. ऐसे स्ट्रगल ना करना पड़े कि क्योंकि डिसेबल्ड है हमें एक अलग ड्राइव चलानी पड़ेगी. हम उस विजन की तरफ अगर जा पाएँ तो आई थिंक विल बी रियली रियली सक्सेसफुल. एंड organizations and coming together of university, like the center of excellence like we have in Ashoka, the IBDN, that's collaborating, the efforts that the government is making, the Change Inkk that we're really bringing about, the things that Sarthak is doing. I think when all of us get together, we can definitely achieve the vision. Thank you so much, everyone. Thank you so much to all our valuable speakers and to our moderator of this session. May I now request Director DEPWD, Veena Chakrabarti ma'am, to kindly felicitate the speakers of the session, Ms. Suhana Bhutani, Mr. Shubham Garg, and Ms. Reena Gupta ma'am, please. Excuse me. Chakrabarti ma'am to kindly felicitate the moderator, Ms. Madhubala ma'am. Sir, I would also like to highlight that both Shubham and Suhana's mum and dad are here with them as they support. Shubham's father is here and Suhana's mum is here. As we heard, it requires very courageous and parents to raise such talented children despite all the challenges. So we're very happy you have come here, and my best wishes.
Thank you, ma'am. Thank you again to the speakers and the moderator of the second session. Now we are going to start with the panel discussion where the agencies giving recruitment to persons with disabilities will come forward. And the speakers for this session are Mr. Raja Sekharan, um, an engineer, an MBA and MS in Public Policy from Carnegie Mellon University, USA. He is a founding team member of Wheelchair Basketball Federation of India. He is a co-founder of VShesh, www.vshesh.com, which is an impact enterprise. And this VShesh assists persons with disabilities by providing information, training and placement services to access quality jobs matching their talent and aspirations. Until now, VShesh has trained 2,000 plus job seekers with disabilities and has made 1,500 plus job connections in the last 3 years. We welcome you, sir, in this panel discussion. We have with us our second speaker, Ms. Richa Sahani, Head of PR, Atypical Advantage. An IT professional, she has done her bachelor's in IT from Delhi University and postgraduate diploma in business management from ICFAI. Her passion for social service motivated her to join Atypical Advantage as head of public relations. And she has more than 2 decades of work experience across sectors as an entrepreneur, a corporate employee, and in the development sector. Ma'am, we welcome you. We also have with us Dr. Jitendra Agrawal, founder, Sarthak Education Trust. Dr. Jitendra Agrawal is the founder and CEO of this Sarthak Educational Trust and Secretary General, National Olympic Association of India. Before starting Sarthak, Dr. Agrawal practiced as dental surgeon for 6 years, but in 2004, he lost his central vision due to macular degeneration and discontinued his practice. And during this period only, he realized dependency as the biggest trauma a person with disability faces. And thus, he envisioned a platform where this dependency can be cured. And with this thought, in 2008, he started with 1 center in Delhi and has gradually expanded to 9 centers across nations. Sir, we welcome you. Moderate this panel discussion, we have with us Mr. Amarpal Chadha, partner and India Disability sponsor Ernst & Young. Over 23 years of experience in the area of people advisory. He is EY India sponsor partner for disability, focus on developing a sustainable environment, embracing diversity. 2 case studies co-authored by him on people mobility have been published in Harvard Business Publishing Repository and are being used in IIMs across India. So we welcome you, and without taking much of your time, I hand over the session to you, sir. Thank you so much. I'm humbled, Honorable Secretary. Thank you for the opportunity, Nupur, for getting us all together here. So is my voice audible? Am I okay? Yeah. Should I be louder? Okay. Thank you. So thank you very much, and I would like to first actually thank Shubham to remind me of how a scribe. So my introduction to the disability world started way back in 92, 93 in my college days when I used to be a scribe. So today I'm remembering that how many squares I would have put wrongly. So I think that also is a sensitization exercise that is needed, because we were just told, do you want to be a scribe? And we said, yes, we want to be. There was no training. We will end up in an exam center and sit and write for somebody. It's a very genuine point that Shubham makes. And also to thank Miss Reena. My son studies at Ashoka, so I get a first-hand experience of what you are saying. Not only disability, but also transgender. So I have a family member who's going through that and is in Ashoka, and we see a very inclusive environment. So it's great. Thank you for being. And I'm actually very grateful to be in this audience. I think a lot of you do a great amount of work. Yeah, it reminds me of my class situation when the most naughtiest child used to be the monitor. I think with this kind of a panel, I feel like that. All these 3 people have done a lot of work in this space, and we are only enabling the environment. So thank you very much. So big thank you for all of you being here. I think just to set context of what we are discussing, we need to remember that as per statistics, 15% of the world's population falls in this category. So we are not talking about reservation. We are not talking about special ability. We're saying 15% of the world population. That means more than 1 billion people are in this category. So we are very privileged, or we should say that we have not done justice to the environment by not doing what we should do with things like these that are happening today. Yeah, so we fall in that category.
Second, I think this is not a case for building space for employment. This is the space for making businesses realize that there is profit in doing this right. Because, pardon me, sir, for this, but businesses only understand that language. So the moment you explain to them that by doing this, you increase profitability of businesses, they understand that. In fact, the founder of Ernst & Young globally is a person with special disability. Yeah? So Ernst Whitney, who went through this, was at Essex. Our current leader is also a person with special disabilities. If you look at the entrepreneurial community, a lot of them come from people with special abilities, yeah, Divyangs. So one needs to realize that businesses need to be explained that. I think that's the most important thing. Lot of data, lot of statistics in the space, but I think time for action. And we are trying to understand this space better. And with organizations, so if you talk about maybe anything at Davos, maybe anything that's related to any big company, they will all say we want to do this. We are very keen to do this. But do they really do this? I think that's the question to answer. Are they enabled to do this? Statement, corporate statement, everybody wants to do it. But there are very handful companies who've actually taken steps to do it. Yeah? And the organizations, these panelists today, I think they're all making that infrastructure, that enablement happen. Yeah? So we need to understand that it's not only about this discussion, it is about believing in the discussion. It's very easy to do that discussion, and that's what I think is my job these days, is to understand disabilities much better. I think Honorable Secretary in the beginning said about the sessions and about the enablement sessions, sensitization sessions. I think every disability is different. At least my learning now is that it's very easy to say that I understand this, but it's not true. Unless you have worked with somebody like this, just saying since I am in this field, I understand this is wrong. Yeah? I think the earlier panel talked about the Tare Zameen, but that's just one. Isn't there? There are so many more, so many more. Yeah? And how it should be made mandatory for everybody to understand from early days, not much later. Like in our case, we first time experienced this is in college. It's too late, I feel. It should be very beginning in the school, and I think our previous panel also spoke about class 11th and 12th to decide a subject. It's too late. Very early in the days, and in my childhood, I have seen my parents use the word bechara. It hurts when people who are educated use that word. That education needs to make sure that people understand the uses of words, because it hurts. Yeah? So that sensitization, that change is what we are talking about today. Because if we want to create confident people who will take employment in public, private sector, things have to change. Yeah. So with that, I will open this to my panel, and I will first start with Dr. Jitendra. Jitendra, you've done a lot of work in this space, and as an organization which is big time into disability hiring, helping people do this. With the change that came back in 2016 in the definition of people with disability, including more than almost 21 categories into that, it will be good to hear from you. Have you seen any change? What's the perspective? And also what our earlier panel was discussing about visible and invisible. If you could share your experience on that, let's start with that, and then we will go into the discussion. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Actually, I'll just share some historic view because youngsters हैं इधर, तो उनको भी मालूम चले कि like how tough initially it was to start hiring of people with disability. अगर हम 2008 की बात करें तो उस ज़माने में जब हम कंपनियों के पास जाते थे कि बच्चे दिव्यांग बच्चे लेने हैं तो मिडल मैनेजर्स के लोग भाग जाते थे कि हमारे यहाँ पॉलिसी नहीं है. फिर हमें लगा कि अब क्या किया जाए, तो वी स्पोक टू द सीनियर मैनेजमेंट, टॉप टू बॉटम अप्रोच. और इस तरह के जैसे हम आज मिल रहे हैं, ऐसे हमने करीब 100 राउंड टेबल्स किए. पहले हमने बीपीओज को टारगेट किया, बीपीओज के लोगों को कुछ सीईओज को बताया, फिर सीएचआरओ भी डरने लगा कि अगर एक हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, कस्टमर इंटरफेस है, तो हीयरिंग इम्पेयर्ड कैसे काम करेगा. फिर उसको बताया कि आप एक वर्क प्लेस सॉल्यूशन कीजिए, उस बच्चे का नाम रखिए और and you can write that my name is Anil, I can't speak and hear. और शुरू में थोड़ा डर के वो लोग बड़ी सिस्टम से हॉस्पिटैलिटी में हायरिंग स्टार्ट हुई. बीपीओ में विजुअली इम्पेयर्ड लोग गए तो बोले आपको दिखता नहीं, कंप्यूटर पे कैसे काम करेंगे. फिर उनको बताया कि एक स्क्रीन रीडर होता है, उससे काम कर सकते हैं. फिजिकली डिसेबल्ड लोगों को बोला आप तो रैंप है, आप वॉशरूम कैसे यूज़ करेंगे, आप क्या खाएंगे. तो ये सब बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस. इसमें किसी का दोष नहीं है, बट
स्टार्टिंग जर्नी इसी तरह का था। एक सेक्टोरल राउंड टेबल पूरे देश में हुआ बीपीओ के साथ, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, ई कॉमर्स, बैंकिंग। तो इस तरह का एक जर्नी रहा 2008 से 13-14 तक, ऐसे 100 राउंड टेबल्स किए। फिर हम सरकार के पास गए कि डाटा दीजिए, बच्चों को लेके आइए। तो डाटा पुराना था, फ़ोन नंबर्स नहीं थे। तो उसको तैयार करने के लिए जो पूरे देश भर में रोज़गार मेले किए, 60,000 दिव्यांग लोग उसमें आए और 3,000 लोगों को नौकरी मिला। फिर हमने देखा कि चैलेंज क्या है कि इन बच्चों के साथ जो है स्किल सेट मैच नहीं कर रहा था। जैसे अभी बात कर रहे थे शुभम और सुहाना कि बच्चे एजुकेशन तो पा रहे थे, दे वर ग्रेजुएट्स, बट देयर स्किल सेट वाज नॉट मैचिंग विद द मार्केट रिक्वायरमेंट। तो फिर उसके लिए उनको स्किलिंग करना है, तो स्किलिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया। फिर पूरे देश भर में इस तरह के सेंटर्स बनाए। तो अगर इस चीज़ को अगर मैं शॉर्ट बताऊं तो उस समय एक भी कंपनी नहीं था, अब 2000 से ज़्यादा कंपनियां हैं। अगर हम भारतवर्ष के इस पूरे सेगमेंट की बात करें तो करीब 5 लाख नौकरियां हैं जो कॉरपोरेट से साल भर में आती है। आई थिंक सब मिलजुल के जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से 50,000 लोगों को रोजगार दे पाता है। 4.5 लाख नौकरियां चली जाती है बेकार, क्योंकि वो हमारे पास कैपेबल ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, दिव्यांग बच्चे तैयार नहीं है। तो मेरा यही निवेदन रहेगा सबसे कि हमें ज़मीन पे काम करने का ज़रूरत है, चाहे डिपार्टमेंट को हो, चाहे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को हो। बच्चों को तैयार करना है। जैसे आईआईटी आईआईएम्स की बात कर रहे थे, हमने एक रिसर्च भी किया आईआईटी आईआईएम्स पे। वहाँ बच्चे को एडमिशन मिल जाता है बट वो स्ट्रगल करता है। आप सबने एक स्टोरी सुना होगा अभी, आईआईटी मुंबई में एक दिव्यांग बच्चे ने सुसाइड कर लिया। ऐसे में आईआईटी चेन्नई में भी विजिट किया, तो बच्चे आ जाते हैं अंदर, लेकिन उनको सपोर्ट सिस्टम चाहिए, चाहे स्कूल में हो चाहे कॉलेज में हो। तो हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है। आई थिंक कंपनियों की तरफ से ठीक है, 2-3 तरह के हैं, कुछ अबो मैच्योरिटी कर्व में हैं, कुछ कुछ अभी देख रहे हैं, कुछ दूर से ही कुछ करते हैं, बट ठीक है। आई थिंक उधर मूवमेंट स्टार्ट हो गया है। हमें अपने पाइपलाइन को, ह्यूमन रिसोर्स को तैयार करना है ताकि वो लोग लेने के लिए तैयार हैं। और काफ़ी लोग 18-20% पे भी चले गए हैं, जहाँ पे 15 से 20% लोग दिव्यांग भी काम करते। तो उस तरफ मूवमेंट अच्छा आ गया है, बट हमें इस तरफ तैयारी अच्छे से करनी है, अपने सिस्टम को तैयार करना है ताकि हम इसके बीच में जो गैप क्रिएट हुआ है इसको फुलफिल कर सकें। डिसेबिलिटी की बात करें तो अमर जी आप सही बोल रहे थे, स्टार्टिंग में जो विजिबल डिसेबिलिटी थी, ब्लाइंड बच्चे थे, हियरिंग इम्पेयर्ड, फिजिकल, उनको मिला। बट अभी 2016 के बाद जो ऑटिस्टिक बच्चे थे, डाउन सिंड्रोम के बच्चे थे, जो बच्चे सेरेब्रल पैल्सी के थे, उनको भी काम मिला और मिल रहा है। दैट डिपेंड्स ऑन ग्रेड ऑफ डिसेबिलिटी, इट्स माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। सो माइल्ड लोगों के लिए, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए आई थिंक ज़्यादा चैलेंज नहीं है, बट मॉडरेट सीवियर के लिए हमें कुछ सॉल्यूशन सोचने हैं, जिस पे काम भी चल रहा है और आने वाले समय में वो भी पूरा होगा। Over to you, Amal ji. Thank you so much, Dr. Jitendra. And I'll come to you. But before I go there, I think एक statement है जो सब use करते हैं, at least हम लोग EY में बहुत use करते हैं, कि disability inclusion is not like inviting somebody to the party. It is like asking some people to dance in the party. So unless you are invited to dance in the party, it is not inclusion. So not only calling people. So ऐसे ही जब हम environment बनाते हैं, just offer people to come for interviews is not enough to make sure कि वो job मिल जाए उनको, और उसके बाद वो stage खत्म नहीं होती है, because there's a lot of data कि people join companies and then they leave. Like अभी जो example दे रहे हैं IIM का, ऐसे ही companies में भी हो रहा है. So how do we make sure that we don't only invite people to the party but also make them dance? I think that's the theme, Mr. Raja. I'd like to ask you that in terms of employment, really whenever at least we speak to corporates, people say, no, there is not enough talent that is available. And when we ask people in organizations like yours and we work with you, people say that, no, there are people who are going for interviews but are not getting selected. So what is your perspective, given you handle so much of data and you're doing a lot of work in this space? So आपका क्या experience है इस पे? थैंक्स अमरपाल जी। पहले आप डांस वैंस बोल रहे थे, मैं डर गया था क्वेश्चन से। So firstly, thanks for this opportunity, and I would like to congratulate and thank the Secretary and Nupur for putting this, under the Ministry of Social Justice. It's a very disenfranchised segment we are talking. Bringing the centrality to this group of population is very, very critical. हम लोग, we at Vishesh, we are a team of 40% of our team persons with disabilities. For disclosure, I'm not a person with disability, but a strong ally working in this last 13 years in this segment, and all of my team members working in this segment and trying to create the change. Oh, sorry, I forgot to describe myself visually also here. I'm wearing a
jacket in here. I'm coming from Chennai, but wearing a jacket in here. Not so comfortable in the jacket, but just wearing it. Blue color shirt. Have a lot of my hair, which is continues to be black, though not that young. I'm a middle-aged person here. Okay, I just thought of visually describing myself for everyone to know whom we are speaking to. So coming to your question, firstly, you talked about coming to the party, and before that, I'd like to add to what Jitendra ji explained about the adding the disability. What is the law? The law, the human rights, very, very good piece of human rights has created, how it has stirred the corporates. You talked about companies understand profit. Yes, companies exist to serve their customers, that is true. But companies also understand legal nuances and need to be complying with the law of the land. So this particular law has brought the discussion to the center of, to the top. So like Jitendra ji's talked about so many roundtables, talking to the CEOs. So it has made our job a little easier, getting the mind space to create that change at the CEOs. At the top, it has got us to the C-suite. Making the changes become a little easier with the law. And definitely, the assessment guidelines and still a lot of work to be done. So expanding the scope of, it's not just visual and whatever is sensory is an impairment. There is much more to that. And even this 21 is also a limitation. Government, the law itself says they can add more and more, and there are many more of that needs to be added. It has just opened up the mind to saying that there is a lot that can be done. So that's another piece. I thought I'll make a point. It's still, the understanding of what is reasonable accommodation is still lacking in the corporate sector. They think of, it's okay, if there is too much burden on us, we don't need to accommodate. There is need of much more education in corporate, that it is the responsibility of the organization, especially the Indian law is very, very powerful in that. So not only to assess, to provide the cost for it, and to ensure it is provided. Denial of reasonable accommodation is equivalent to discrimination. So that is still not fully understood. They think that if we don't provide accommodation, we can get away with it because it is not reasonable to us. The burden of proving it is not reasonable is on the corporate. So that is something which I think there is a need for more advocacy, more championing to be done. Now, talking about, you talked about coming to a party and coming, dancing as an inclusion. I would say I would just add one step more, because currently in our setup in our country, a lot of people with disabilities, when they get a job, they think they are already grateful to the organization. They don't even ask for what is required. They say, oh, इतना सब मिल गया, इतना सब हो गया, मुझे मतलब कहीं नहीं जा पा रहा था, मुझे नौकरी तो मिल गया. So it is important to also empower and have their voice and proactively engage so the voice is there in the party, so that the companies are going to benefit. So fundamentally what I wanted to say is, it's seeing from, it's the right thing to do, the shift from right thing to do and the noble cause, etc. is gone. It has to be a part of the talent strategy of the organization. Clearly, it's a part of the talent strategy, because this is a significant number. 15%, 20% is a number also. It's a representing the society. It is definitely social justice, representing society. It is a talent which is going to give the organizations huge insights and benefits. EY Center of Excellence is very well known from a neurodiversity center of excellence, where problems which could not be solved either before, we have Shubham, who is a Scrum Master, etc. Problems which we are not, which people have, neurotypical people or other people without disabilities have not been able to solve. There are insights and etc. which the organization can benefit, and that has to be the strategy, and that has to be the direction that has to be taken, I thought, and the overall ownership has to be by the HR and business. Right now, the ownership is by, earlier it used to be CSR, luckily that is over now. It's no longer considered CSR, but still now, even now the ownership is a little bit on the D&I and the disability, equity and inclusion, whatever names, it keeps changing every year or every couple of years. But that takes the ownership. It looks like hiring and getting the numbers is there. The ownership has to slowly shift towards business. Now coming to your question about, on one end, companies say we don't have people, and the other end,
we have people, but their skills are not there. So the only way is, I think Madhu talked about it, look at, companies should proactively go towards, first of all, the companies should not wait for a perfect state. There is nothing like a perfect state here. Readiness is a spectrum. You are ready, you're not ready. There are organizations which are high end of readiness or maturity, but there is no organization which is 100% ready on the accessibility and inclusion. The best of organizations would, because as you said, disability itself is so diverse, 21 types, but many more, many more types. So there's no readiness fully. So important is for organizations to go ahead with some prerequisites, not wait for to be fully ready and not go ahead. Wait for some prerequisites. At the same time, not underestimate that we got to be prepared. That's why the prerequisites. We all know, we are sensitized. हमने sensitization session कर लिया है. हमको सब जानते हैं. We are all very, very sensitive people. We have done so much work in gender, so we can go ahead. No, that may not work. Not to underestimate that there are, there could be. So need to prepare and have so few prerequisites. Take few prerequisites. Ensure that your recruiting managers, recruiters are all sensitized of how to ensure there is a dignified process of interaction. I'm using the word interaction deliberately because a lot of, for neurodivergent individuals, interaction may not be the, interviews may not be the right way, but so I'm saying interaction. So is there, so having that in place. And of course, making sure, readiness from an infrastructure, digital, and is again a story. Basic readiness is there, from access to the workplace, is there access to use of restrooms, meeting rooms, etc. is in place, and the team in which they are going to be there, you think that the team is ready to in some cases ready to also train and be ready with some extra small bandwidth, nothing different, is there. Once that is there, it's very, very critical. Nothing about us without us. Giving on that principle, having individuals is the only way the organization is growing and scaling up. So jump into recruitment. It could be sounding bold, but you have to jump into recruitment. And recruitment, not to. And when you jump into recruitment, that is when okay, where is the skill gap? Okay, I'm there in that interaction process. This is the skill I need, and the talent pool is at this skill level. Okay, this is. ये थोड़ा सा इधर ट्वीक करेंगे, इंग्लिश का रिक्वायरमेंट है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो कन्वेंशनल एचआर प्रोसेस है, सिस्टम्स है, वो पूरा चेंज करने का ज़रूरत है. आई कैन टॉक ऑन एंड ऑन अबाउट इट बिकॉज वी टॉक्ड अबाउट, Shubham talked and others talked about not having access to a scribe, and someone who's writing SQS square means the person this extra time is not going to make sure the scores are representative. So your cutoff scores, age, your academic qualification, all that have to be relooked surely from a criteria standpoint. So, and then your selection process has to be made fitness for purpose. Even after doing all of that, you don't look at train and hire models. And this train and hire model again is no charity, no favor being done. It is being done because the education system, the higher education system is all going through that change and evolution. It will take a while to have individuals which are at the same skill level, at which you are hiring from the market. It is no favor being done. So a train and hire or an internship or an apprenticeship is going to help give that matchmaking. And we have run many of those batches. I'm sure Jitendra Agarwal ji and Richa is here from Atypical. We have all experienced that when the skill is not there in the market in the labor market that we are serving. Look at such alternate recruitment models. Some investment be required, but in the long run, it's going to pay off with better retention, better productivity, and reduce the HR costs. So these are the few points that I would make and hand it back to you. Thank you, Mr. Raja. I think you covered a lot of points, and I was not inviting you to dance, so that was not the intention. Yeah, and that's my learning. Somebody may like to dance in a party, somebody may not. Exactly. It's very important to understand that subtle difference. You may host someone, but you will have to understand the requirements and needs of that person. So just because you are the host, you can't ask people to do what you want to do. Yeah?
And that's the crux of understanding this whole space of disability, to be able to get a good understanding. Yeah, like the example Mr. Raja was just giving on the neurodiversity. I think an interview like for at EY, the interview process, which is normally 30 minutes to 1 hour, was spread over 5 days of interaction. It was just an interaction, not an interview. Because if you have to understand what is the skill set that the person possesses, or even go a step back and say potential, to see what is the area of interest, because sometimes when you are hiring at an entry level, it is just gauging the potential of the person in terms of what do they like to do, and rest is all about, like what he was saying, about training them to get them into the right sphere. Yeah. With that, I will move to Ms. Richa. Given your experience, I have one very interesting question for you. See, we all talk about this hiring, but when we get into the boardroom, people get scared that if I get people with special abilities into the room, will the company suffer? So, given your great experience in Atypical, would you like to share how do you address this issue? Thank you so much, Mr. Chadha and Honorable Secretary, and Nupur, thank you for having the typical advantage over here. So, yes, I think the nervousness stems from lack of exposure. And that's not about disability only, it's in any sphere. जब हमें किसी चीज़ का exposure नहीं होता है तो हम उससे डरते हैं. So the right way perhaps to address it, and what we at Atypical do and encourage corporates to do, who are just thinking ki are we ready for disability inclusion, how should we go about it, is we tell them, why don't you get a person with disability into the office, get a motivational speaker with disability into the office, get a singer with disability into the office on one of the maybe Women's Day or something that you're celebrating, and allow your employees to interact with the person, allow the person to share their lived experiences with your employees, and that will build a little bit of sensitization by and by. तो उससे बहुत सारे stereotypes और unconscious biases जो होते हैं वो धीरे धीरे break हो सकते हैं. Atypical advantage, I want to tell a little bit about atypical advantage. So it is into the livelihood generation, and while inclusive hiring is one of our verticals, the other verticals, we understood that a lot of people with disabilities may not have had access to education like a person without disability would have had, but they may be extremely talented in something else. So we have a lot of freelancers with disabilities, content writers, photographers, singers, dancers, motivational speakers, magicians. We have a lot of artists with disabilities also. So again, when I talk about artwork by a person with disability, if corporates were to bring in those artworks, if government offices were to have those artworks with the story of the person with disability, so walking by, employees can learn about it. So that's one little step of disability sensitization. The next step is, even we had a very recent example. There, Kai is an IT service global, and it is done tremendous work in hiring people with disabilities globally. बट इंडिया में उन्होंने कुछ खास अभी किया नहीं था, और वो जब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम से एम्प्लॉयज़ हायर करने को सोच रहे थे तो दे ऑल्सो वर नर्वस. तो इट्स नॉट दैट an organization that's not yet started gets nervous. Even a global organization जो इंडिया में पहली बार person with disability को hire कर रही है, they also tend to get nervous. So what we did was we comforted them that we will be able to provide you with the right candidates. We vetted the resumes for them. हमने एक जॉब कोच भी प्रोवाइड करा उनको. तो जॉब कोच प्रोवाइड कर देना जो कंपनी अभी स्टार्ट हो रही है अपनी डिसेबिलिटी जर्नी में, दैट्स ऑल्सो गुड आइडिया. एंड देन what we have realized कि hiring processes, as you have rightly said, Dr. Jitendra Agrawal and Mr. Rajashekharan, that hiring process is not always aligned. तो कई बार क्या होता है, जब हम लोगों को भी एक्सपीरियंस होता है कि कैंडिडेट टैलेंटेड है, उसमें स्किल है, बट कहीं ना कहीं क्योंकि सोशल स्किल लैकिंग है या उतना कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, इसलिए हायरिंग हो नहीं पाती. तो इस तरह की प्रैक्टिसेस के लिए जो रिक्रूटिंग मैनेजर्स हैं उनको ट्रेन करना, दैट शुड बी द फर्स्ट स्टेप ऑफ द कॉर्पोरेट. सो इफ आई गो स्टेप बाय स्टेप, आई थिंक द कॉर्पोरेट, सबसे पहले आप अपनी खुद की असेसमेंट कीजिए कि वेयर एम आई ऑन द डिसेबिलिटी इंक्लूजन जर्नी.
किस जॉब रोल में मुझे हायर करना है, कौन सी डिसेबिलिटी से मुझे अपनी हायरिंग स्टार्ट करनी है, और उसके लिए आप केस स्टडीज देख सकते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस देख सकते हैं, एटिपिकल एडवांटेज जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सार्थक जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, विशेष जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यू कैन पार्टनर विद देम, कोलैबोरेट विद देम एंड गेट सम लर्निंग्स सो दैट दे कैन गाइड यू. द नेक्स्ट इज द बिजनेस केस. तो जब हम डाइवर्सिटी लाते हैं कभी भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उसी से इनोवेशन पैदा होती है. देयर आर अ लॉट ऑफ innovations that have stemmed by hiring people with disabilities into the mainstream jobs, Alexa, Siri, Google, even जो हम subtitles देखते हैं, and then organizations discovered that there's a much wider use case for these innovations. We have enough and more reports by Accenture that आपका नेट रेवेन्यू, आपका प्रॉफिट मार्जिन, ये सब बहुत इंक्रीज हो जाता है. और इवन जो आपका, जैसे हमने बात करी कि 15% लोग वर्ल्ड में दे आर पीपल विद डिसेबिलिटीज, तो ये एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस भी है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए. और जो ऑर्गेनाइजेशंस पीपल विद डिसेबिलिटीज को मेन स्ट्रीम वर्कफोर्स में हायर करती हैं, their tendency of people with disabilities to engage with these organizations as customers also increases tremendously. So these are some of the things that if organizations उनके साथ बात करने में, विशेष, एटिपिकल, सार्थक, if we can convince them, I think that will go a long way. So these are some of the ideas. And last thing that I want to add is, अगर आपको लग रहा है कि मैं डायरेक्ट हायरिंग के लिए रेडी नहीं हूँ, तो आप अप्रेंटिसशिप या ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी की. उससे क्या होगा कि जो आपके करेंट एम्प्लॉयज हैं, दे विल गेट अ चांस टू इंटरेक्ट विद दोज पीपल विद डिसेबिलिटीज एंड अंडरस्टैंड आपकी स्ट्रैटेजी में इम्प्लीमेंटेशन लेवल गैप्स क्या हैं, करेक्ट, एंड ऑल्सो दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड how many people we can hire and how to improve my whole hiring process. So those are some of the learnings. Thank you very much, Ms. Rishi. A lot of inputs. And on your apprenticeship point, in fact, सरकार की स्कीम है नेशनल अप्रेंटिस स्कीम. So anyway, आज की डेट में उसकी अवेयरनेस क्रिएट करना कि already the government is working on that. So that can be used for this sector very easily. That is one good opportunity. एक और बहुत important point आपने बोला, fear of unknown. I think in your opening statement you said that fear of unknown. I think most of the companies, corporates, private sector, public sector, that is the biggest challenge. And that comes from lack of awareness, lack of knowledge, nothing else. So this fear of unknown, like I have an example practically in life of a friend who's now wheelchair bound. Yeah? His biggest fear is to go to a doctor. Because it's the fear of unknown. He feels that every new doctor you consult, he may restrict his movement or say something which he doesn't like. So fear of unknown. I think that is also very much applicable to corporates. You don't understand so easily that if I take somebody inside the organization, will I struggle later to deliver? Because everybody has commitments, everybody has margin consideration. So companies को बहुत सोचना पड़ता है decision से पहले. So वो एक education exercise is very important. Yeah, I think we can ask Dr. Jitendra on this one. Dr. Jitendra, will you like to share some wins in this hiring sector, and what kind of disabilities do you see companies easily absorbing? What's your experience? अच्छा, so before that I think हम लोग राजेश अग्रवाल जी के लिए एक ताली बजा सकते हैं. I think 5 बजे तक बैठे हैं. मेरे को 2016 की याद आ रही, जब लव वर्मा जी सेक्रेटरी थे, तो एक राउंड टेबल था हैदराबाद में हमारा. 5 बजे भी वो बैठे थे. मैंने पूछा कि लव वर्मा जी, ये कह रहा हाँ. तो आई थिंक सर थैंक यू सो मच कि आप लास्ट सेशन तक भी यहाँ रुके हुए हैं. आई थिंक 2016 में सर हमने कुछ 4-5 चीज़ें की. सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके, जैसे हमारे साथ राजा हैं और शांति, मीरा जी, इधर विनीत, सब लोगों ने 4-5 बड़े काम किए थे सर 2016 में. कि एक सिप्डा स्कीम लॉन्च की थी, नेशनल एक्शन प्लान, जिसका टारगेट था कि 22 लाख लोगों को ट्रेन करना था. एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन आया, राइट्स ऑफ PWD बिल आया. जब पार्लियामेंट चल भी नहीं रहा था तब सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके पुश किया सर गवर्नमेंट को, तो वो आ गया. बट सर उसके बाद 2016 के बाद सेक्टर स्किल काउंसिल भी बना, बट वो मूवमेंट कम हो गया. बट हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि सर अब आपके आने के बाद ये मूवमेंट आएगा, क्योंकि आपके पास ये टैलेंट पूल है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का. जैसे आप राजा जी को देखेंगे, ये इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, नुपुर जी, ऐसे बहुत सारे लोग आपको देखेंगे हर स्टेट में हैं.
आप अगर इनका मदद लेंगे सर तो आपके डिपार्टमेंट की स्ट्रेंथ 500 गुना बढ़ जाएगी और ये जो इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंजेस थे सिप्डा स्कीम में ये दूर हो सकते हैं सर। मेरा आपसे निवेदन है सर इस बारे में। आई थिंक कमिंग टू योर क्वेश्चन अमर जी की देखिए इनिशियली व्हेन जब हायरिंग की बात आती है तो फिजिकल डिसेबिलिटी को टारगेट करता है, सॉफ्ट जो आसानी से काम बन जाए किसी भी कॉर्पोरेट के लिए, एंड देन ही विल थिंक अबाउट हियरिंग इम्पेयर्डनेस एंड देन विजुअली इम्पेयर्ड, और फिर उसके बाद वो जो है दूसरी डिसेबिलिटी की तरफ जाता है। और वो एक देखिए अभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो क्या करता है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो भी कर रहा है उसको हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए और उस प्रोसेस को तैयार करना चाहिए। बिकॉज हमें लगता है कि जो दिव्यांग बच्चों को हायर कर रहा है वो लैक ऑफ अवेयरनेस था। अब जैसे हम लोग 10 साल बाद देखते हैं कि उस समय अवेयरनेस नहीं था, उन्होंने कभी डिसेबल्ड बंदा पब्लिक प्लेस पे नहीं देखा था, कहीं थिएटर में रेस्टोरेंट में कभी नहीं देखा था, तो वो डरते थे उस बारे में। बट अब अवेयरनेस बढ़ रहा है तो धीरे धीरे उस तरफ हमें उस प्रोसेस को एक जैसे अभी रिचा ने राजा जी ने बताया कि हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनाना है कि जैसे हमें पहले जॉब मैपिंग, जैसे अभी नया कंपनी आता है तो पहले यहाँ जॉब मैपिंग का प्रोसेस करते हैं कि कौन से प्रोफाइल में किस डिसेबिलिटी के लोग कंफर्टेबली विदाउट एनी चैलेंजेस हायर हो सकते हैं। तो पहला स्टेप जॉब मैपिंग का होता है। उसके बाद वहाँ एक्सेसिबिलिटी स्टडी किया जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या क्या चैलेंजेस हैं, उसको कैसे एक्सेसिबल बनाया जाए। उसके बाद में उसी तरह से आईसीटी की एक्सेसिबिलिटी, जब इस तरह की दोनों चीज़ें ऑडिट हो जाती हैं उसके बाद फिर एचआर की ट्रेनिंग की जाती है। जैसे अभी राजा जी बता रहे थे कि एचआर को कैसे जॉब को एडवर्टाइज करना है, कैसे जो उससे सवाल जवाब करने हैं, जैसे आपने बताया न्यूरो डाइवर्सिटी के बारे में इंटरेक्शन कैसे करना है, तो एचआर की ट्रेनिंग नहीं होती, उनके सब्जेक्ट में होता होगा बट जितना हमारा एक्सपीरियंस रहा उनकी ट्रेनिंग नहीं होती कि एक दिव्यांग बच्चे के साथ कैसे उसकी जॉब को एडवर्टाइज करना है, कैसे इंटरव्यू लेना है, फिर उसको ऑन बोर्ड कैसे करना है, ऑन बोर्ड करने के बाद उसकी ट्रेनिंग कैसे करनी है, फिर सेकेंडरी ट्रेनिंग कैसे करनी है उस बच्चे की। चैलेंजेस तो अब ये भी आते हैं कि नॉन डिसेबल्ड लोग जो होते हैं वो डिसेबल्ड हो जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं छोड़ना चाहती और दूसरे वो बच्चा भी नहीं छोड़ना चाहता, तो उसकी भी कैसे उसको रिहेबिलिटेट किया जाए, तो इस तरह का भी ट्रेनिंग एचआर का हो रहा है अभी। उसके बाद जब एचआर का ट्रेनिंग होने के बाद उस बच्चे का से प्लेसमेंट से पहले उसका सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप मिडल मैनेजर्स के साथ, सुपरवाइजर्स के साथ, सब लोगों के साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको इनिशियली लगता है कि एक डिसेबल्ड दे दिया बड़ा मुश्किल होगा। पहले मेरी टीम में लोग कम थे बट उसको ये बताना होता है कि ऑफ कोर्स इस पर्सन विद डिसेबिलिटी बट इसकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद जब ऑन बोर्डिंग के बाद फिर एक पोस्ट प्लेसमेंट फॉलोअप का चेन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि 3 महीने तक 6 महीने तक चलता है, क्योंकि जैसे हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं वहाँ कम्युनिकेशन गैप होता है, वहाँ कई सारे चैलेंजेस अननोइंगली आ जाते हैं, तो वो उसके साथ पेरेंट के साथ, बच्चे के साथ, एम्प्लॉयर के साथ मिल के एक कड़ी में काम करना पड़ता है, तो फिर वो काम बन जाता है। लेकिन जिन ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको पिक किया, अपना डीएनए बना लिया, मीन्स उनके कल्चर में आ गए, जैसे मधु ने कल्चर की बात की थी, वो अब बहुत आगे चले गए हैं और उनको फ़ायदा भी नज़र आने लगा है ना, उनको बिजनेस मिलने लगा कि दूसरा कस्टमर सोचता है कि अच्छा ये डिसेबल्ड लोग हायर करते हैं तो वाई डोंट वी गो एंड ना वहाँ रहें, हम वहाँ शॉपिंग करें, वहाँ पे उस रेस्टोरेंट में जाएं। आप सुनते होंगे मिर्ची माइम, ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट अभी खुल गए हैं अलग अलग, वो बहुत फेमस है, वहाँ नॉन डिसेबल्ड लोग बहुत, तो उनको बिजनेस भी मिलने लगा। उनको लगा कि ये दिव्यांग लोग ज़्यादा काम करते हैं। अगर स्पेशली बीपीओ की बात की जाए तो जो 100 कॉल्स एक नॉन डिसेबल्ड करता है तो वो 200 करता है, तो उनको फ़ायदे का सौदा नज़र आने लगा। अब इसलिए फिर उनके लिए भी विन विन और दिव्यांग लोगों के लिए विन विन, और दोनों तरफ से ये आगे काम हो रहा है। Thank you for sharing, Dr. Jitendra. This very good insights. And I'll move to you, Mr. Raza. I think a very interesting point that Dr. Jitendra is making is the ability of a candidate to find a good job in the organization. So let's twist this a little towards the candidate now. We've spoken a lot about the companies, employers. What should a candidate do to make sure that he gets the right job? And the other part, that he or she does not get an isolated job. Because see, there is always a fear to hire somebody and put in a corner. How do they come into the mainstream? And I'll add one more tangent, because the biggest learning in the last 3 years during COVID is the virtual workspace. So how do you see all of this coming together or showing much more opportunities? You know, because the whole locomotive problem has got solved because of a testing period during COVID, that work can happen from anywhere. Before that, nobody would believe that work can happen from anywhere. It was a trust issue that whether people can perform, not perform. That's sorted. At least employers now believe work can happen. So your inputs will be really helpful on this whole spectrum. Sure. I think again I will
place the burden, given the situation where the challenge is, yes, from the candidate side, what the candidate is saying. Candidate definitely has not had the equal opportunity to get the same level of skills. It is. I mean, we keep motivating, we keep advocating. Yes, there is also socioeconomic segment, etc. Segmentation. Disabled people are more likely to be from a poorer segment than the others. So there is going to be a skill gap. So of course, constantly from our organizations, all of us, Sarthak is here and Richa is here. All of us are into that space to motivate the candidate, counsel the candidate, hausla rakho, build their confidence, etc. And to say that talent is going to take you through, make sure you're skilled. We are here to make sure that we throw light on the corporates, but I'll still put the burden on the corporates and all of us as a society, as a government and everyone, is that we still have this challenge of recruitment के लिए जाते हैं, locomotor fine, mobility fine, partial चलेगा. ये partial क्या है? अभी partial मतलब hearing partial vision चलेगा, but पूरा नहीं चाहिए. So this is the biggest challenge a lot of people face, and to the extent like we have conditions like RP where retinitis pigmentosa, where it is declining, where the person has vision, but we have seen the organizations developing a cold feet. Whether it further decline, will it further decline? Will it stop? Whether we have to give a 6-month period for the person to rehabilitate, do mobility training, to do screen reader training, and come back. Giving breaks. Maternity break is part of the course, but still companies develop a course. So most cases, thanks to this challenge of more. At least the global MNCs are open to hire, and so for mobility, work from home, flexi work has helped a lot. But for others, the challenge continues to remain. Even apart from the few, lot of MNCs and lot of good advocacy by Jitendra ji, Atypical Advantage, we have had increased the tribe among SMEs, Indian companies, but we still need a lot more. Transportation to office even once or twice a week costs. Public transportation is not accessible. Buses are low floor buses are not there and all, and even so getting and it is as good as 25% or sometimes 50% of the wages for an entry level person, and it's a difference between wanting to go for the job or not go for the job. So like Jitendra ji talked about revising the SIPDA scheme. I think there is also a need from the government, the corporates, to see what kind of right incentive structures can be created to defray these hidden costs. So then finally about again I will harp a little bit on the challenges that individuals face, especially people in the spectrum, etc., of the interaction process. I can tell you a case of a recent. It's a large company. It's not about the company. It's about every organization. We said no with interview. We told them interview is not the right way, because interview is a test of social skills, and you will not. A person who is neurodivergent would definitely not be able to express his skills. You would not be able to read. You'll tend to misjudge and not progress. I said, okay, then what do we do? Then we said, okay, we'll structure a 3-step process. For you, first step is to meet and greet the individual, tell them about the recruitment process. Second step, develop a case study which is similar to what is the skill that you have. Do the case study, 3-4, give them time at their own convenience, so time and anxiety is not a factor. And then finally, have an interaction based on the case study, and then take a go, no-go decision. We did tell them like this. And then, but the company said, okay, this is like, it takes time, and this process takes time. Then said, okay, first let us talk to the individual. And they spoke to the individual and said, hey, this is fine, we can handle it, problem नहीं है, वो तो ठीक से जवाब दे रहा है, मैंने हमारे recruiter ने बात किया है, कुछ सब सही है, so let's go ahead. Why do we want to do all of this? So again, I'm talking about preparedness. Again, the problem, I'm talking about the problem with individuals are facing. They think we are prepared and they go ahead. Interview happens. They shared the person was this for
some accounting, etc. The person was shared a JD in advance, and at the time of the interaction, the first step, have you read the JD? The JD was sent in the morning, actually. The person said, no, I have not read the JD. And I just got it in the morning. I have not get, and of course, you know, our JDs are all very, very complicated, asks for all kind of adjective skills, etc. So the person said, I have not read. So he said, brother, in a nice tone, brother, I can give you some advice. You have to prepare, you know, important to prepare well for an interview by going through the JD. Now, this is a person who is from the spectrum. He has struggled, worked 2 days preparing for the interview, struggling and looking at accounting formulas, revising and coming for the interview. And he gets a feedback in the interview process that you have to prepare. The whole interview process completely goes for a toss. He says something, the interview does not happen, he becomes anxious. This guy also becomes says XYZ tries to complete the 30-minute round, 45-minute round, and says we don't know what we could end up. So what the problem I'm saying is assuming that we are fully prepared. So and it happens a lot with invisible conditions. You know, invisible conditions, people are able to judge and make adaptations, etc. There are, of course, there are challenges in terms of making that available at the application stage. But this under preparedness is one of the challenges. So under preparedness, you know, partial things, those stereotypes is what most of the candidates are currently facing. Still, some distance to go. There is hope. We are all at it, and hopefully the door is open. Like Jitendra ji said, if companies to hiring persons with disabilities, the door is open. We use that as a hope to stay engaged, and thanks to people like you, we'll be able to influence them to open up for all types of impairment. Thank you very much for sharing that. I think on your point of invisible disability, I'd like to just highlight that as an employer or as any company, we conduct a lot of surveys asking people on an anonymous basis that do you have disability. You will see a large number of people saying yes. But when you ask them the next question or say, would you like to disclose who you are, we find only 10 to 15% of the people coming back. So that is a reflection on us. That means we are not doing a good job enough because people have disabilities. For example, a survey on stammering. A lot of people don't want to discuss that because they feel that we start judging people if they stammer. Small thing. But things like these become very important. For us to get educated, it's not the other side. It is for us to get educated. With that, I think I'll move for my last question to Ms. Richa. Many of the companies, including the companies we interact with, are making foray into this. They want to create cohorts, hire 10, 20 people in the space. But there is no future plan that what will they do? How will they professionally develop these people? What's the long-term plan? All they want to do is tick in the box, start the journey, which is not bad. Like what Dr. Jitendra was saying, at least thank them that they're starting the job. But how do you make this sustainable? What should companies do to make sure that these people rise in the system and reach the C-suite? Thank you so much for that question. First of all, I'll agree that there is very little ground covered when it comes to thinking about long-term career progression of a person with disability. And even before that, Mr. Raja was just talking about the job description. So I just want to share an experience that we had a candidate who had done, because he had to take a humanities course in college because science, he could not go through the JE route and everything. But he was very passionate about technology. He did a lot of courses in AI, data science and whatnot. So he was perfectly skilled. But because the JD was saying BTech degree, the candidate could not get the job. So likewise, even in career progression, first of all, we have to relax. Say, for example, the organization has that from step A to step B, these are the requirements. We have to make a little bit of a relaxation for a person with disability because the entire life journey has been different, especially for people with neurodiversity, people from the neurodiversity spectrum. Having said that, there are two sides to it. First of all, training and upskilling is an imperative part.
And not only it's the onus doesn't only lie on the employer, but I think it also lies on the employee. A lot of organizations, some of the best practices, if I can share. So what they do is when they hire a person with disability, they put in place an ecosystem, maybe by a constant mentoring support. तो उनके साथ एक mentor attach कर दिया जाता है, या उनके साथ एक buddy attach कर दिया जाता है, or they have employee resource groups. And there are organizations that have gone to the extent of making the career progression of a person with disability the responsibility of the reporting manager. So when the manager appraisal comes up, they are asked that, why this person with disability, what is the issue? So there has to be some kind of a monitoring. If the person is not progressing in the job, then it should be the responsibility of the candidate and the reporting manager both. And there has to be some way of taking that feedback and then assessing what are the gaps. Is this an issue of a lack of accessible culture in the organization? Is this is this an issue of lack of accessible infrastructure or technology within the organization? तो कहाँ दिक्कत आ रही है वो बहुत ज़रूरी है. अगर दिक्कत ये आ रही है कि candidate is very complacent in the current job role, then that is fine. But otherwise, if the candidate is ambitious and wants to move forward, then we need to identify the areas where we are lacking and improve upon it. And some of what you're saying is also proved by the fact that the attrition in this sector is very low. Yes. Generally, people don't leave easily because they feel, like what you said in the opening, thankful to the organization and stay with the organization. And less choices. Yes. Less organizations. The market for jobs from a job seeker's point is not that many. Correct. So that's why, I would rather have a situation attrition when a lot of organizations say 2 साल के बाद छोड़ दिया your. Then I say attrition is a standard process. It's industry wide, people are right. So if people with disabilities are also attriting, it is good. And of course, the skill sets, the extra insight, that is what we are is to be recognized. So, sorry. No, that's a very valid point. We'll reach the end of our session by asking each of the panelists what would, if you were to crystal gaze and say, okay, these are the 2-3 things that can really make a difference that we should do. And we can start with Dr. Jitendra. What would you think could really make difference in this sector? I think you've already put a few requirements to the Honorable Secretary, but it'll be good to hear from you. आई थिंक जैसे लाइक वी वर डिस्कसिंग कि सरकार का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहता है बिकॉज उस सबसे बड़ा स्केलेटन सरकार के पास है. तो मेरा निवेदन यही रहेगा सेक्रेटरी सर कि जैसे आपके NIVH हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट हैं या CRCs हैं या DDRCs हैं, वो बेनिफिशियरी को तो सुविधा दें बट वो रिसोर्स सेंटर की तरह काम करें. जैसे सुहाना बता रही थी कि पढ़े लिखे डॉक्टर को नहीं मालूम कि डिसेबिलिटी को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है नियोनेटल ICU में, बट आपके रिसोर्स सेंटर जो नेशनल इंस्टीट्यूट है वो उनको ट्रेन कर सकते हैं कि कैसे एक बच्चा अगर जन्म लेता है तो वो जो रिस्क बेबी सेक्शन में रखा जाएगा तो उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा. मैं ऐसे गायनोकोलॉजिस्ट और पेडिट्रिशियन से मिलता हूँ, उनको नहीं मालूम, बोलते यार हम तो पढ़े थे भूल गए, अब बताओ कैसे करना है. पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग की जा सकती है कि हमारे जो प्राइमरी हेल्थ केयर में जो बच्चे जन्म लेते हैं उनको आइडेंटिफाई कर ले वो. तो जो सरकार का जो सबसे नेशनल 7 या 8 जो नेशनल इंस्टीट्यूट हैं हर स्टेट में, जो CRCs हैं, DDRCs हैं, उनको रिसोर्स सेंटर की तरह किया जाए और स्पेशली जो गांव में NGOs हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जाए ताकि वो भी सीखें कि ये कैसे, क्योंकि अगर हम आइडेंटिफाई बच्चे को इमीडिएटली बर्थ के बाद कर लेंगे तो डिसेबिलिटी को काफ़ी हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं. दूसरा, एजुकेशन के बारे में तो सबने बताया कि हमारे सर्व शिक्षा अभियान में जो है 20 दिन में एक टीचर, स्पेशल टीचर होता है जो एक महीने में एक बार स्कूल विजिट करता है. तो कैसे हम बदलाव की तरफ देख सकते हैं. तो कई सारे मॉडल हैं, रिसोर्स सेंटर बनाए लोगों ने, सपोर्ट स्ट्रक्चर, अभी इधर रीचा ने कोच की बात की, तो ऐसा बहुत कुछ है जो एजुकेशन स्पेस में किया जा सकता है. आई थिंक स्किल में एक 2016 में VRC है, एक मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का, नेशनल कैरियर काउंसलिंग सेंटर बोलते हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के पास है. 24 VRCs हैं पूरे देश भर में. उनके लिए मंथन भी हुआ था, आई थिंक डिपार्टमेंट से लेटर भी चला गया था उनको डिपार्टमेंट में लाने के लिए, वो काम भी रुका हुआ है. बट वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जहाँ पे आप बहुत सारे लोगों की ट्रेनिंग कर सकते हैं अलग अलग डिसेबिलिटी के हिसाब से, ताकि ट्रेनर तैयार हो जाए, रिसोर्स तैयार हो जाए. और बड़े हर स्टेट में एक VRC जैसे आपके CRC है, तो बड़े लेवल पे हम लोग इस सिप्डा स्कीम को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसकी तरह से, क्योंकि अभी चैलेंज इस सेक्टर में ट्रेनर्स का भी है, स्टाफ का भी है.
कुछ लोग आते हैं, कुछ चले जाते हैं, तो बड़ा चैलेंज है। तो हमें अगर वो ह्यूमन रिसोर्स तैयार करना है तो उन जो है करियर काउंसलिंग सेंटर्स में हम तैयार कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स मिलेगा तो हम ज़्यादा लोगों की ट्रेनिंग करेंगे। एनजीओज़ को भी इंक्लूड किया जा सकता है, और उसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं सर। यूडीआईडी कार्ड था, जैसे अभी इलेक्शन कमीशन के साथ आया कि इलेक्शन कमीशन के पास हम अभी 15% की बात करते हैं, पर सिर्फ 85 लाख वोटर हैं भारतवर्ष में जो दिव्यांग वोटिंग करते हैं। अब उनको बताया गया कि भाई इतने दिव्यांग लोग हैं, करीब 5 करोड़ तो होंगे जो 18 साल से ऊपर होंगे, बट वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उनके साथ भी एनजीओज़ को इंक्लूड किया गया है ताकि वो भी अवेयरनेस क्रिएट करें। तो इस तरह से बहुत सारे चीज़ें हैं सर, बट मेरे को लगता है जहाँ जहाँ अब हम हैं, हमें आगे स्केलिंग अप करना चाहिए। बिकॉज जो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन में भी हुआ कि जो हमें रेलवे स्टेशन 2022 तक एयरपोर्ट्स बनाने थे, उसमें भी काफ़ी डिले, बट मिलजुल के हम सब इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच। So I would like to talk more about the corporate sector क्योंकि हमने उसी में करा है। सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि एटलीस्ट एंट्री लेवल पे, इंटरव्यू लेवल के ऊपर आप इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दीजिए। अगर कॉर्पोरेट्स ये भी सोच लें कि जो रेज्यूमेज हमारे पास आ रहे हैं उसमें 6 से 7% रेज्यूमेज पीपल विद डिसेबिलिटी के होंगे, एंड देन आप उसको मेरिट के ऊपर असेस करिए, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड स्टेप। Second is from the government standpoint, maybe a better accountability mechanism. Like a lot of countries, I don't know how implementable it is in India, but in the public sector, we have a job reservation quota, but we don't have a similar mechanism in the private sector. So maybe the government can think if that would be a good step. And apart from that, from the government sector, incentivization for corporates, better incentivizations and recognition of corporates and businesses which are hiring people with disabilities. And the third most critical point is ramping up the accessible infrastructure. Because as everybody has said, from house to home to office to home is a journey that a person with disability will have to take every single day of his working life. So that has to be seamless and smooth. One more point I have, that maybe the corporates can think, because education is coming up as one of the pain points. तो CSR budgets जो होते हैं corporates के, अगर वो हम divert करें उसका ज़्यादा chunk towards education of people with disabilities, especially in the higher education institutes, I think that also would be a So 3 points. I'll also talk specifically about employment and private sector because that is where we are have the expertise. First is to be bold but not reckless. There is a method to it. We use this 4E model, which हमारा model नहीं है. Accenture study ने 100 companies, progressive companies को साथ देख के बनाया है. Which means इसको holistic करने के लिए enable कीजिए, which is infrastructure को, policies को revisit कीजिए, put that in place. Engage, which means build sensitization, employers, resource groups, team co-sensitization, all of that. And then employ, which is to hire and ensure career progression. And finally is to empower, because especially हमारे in a country like India, all things are not equal. Potential is to be identified. You have got to empower, have executive education programs like Sanjay Singh ji is here. We are working with ISLRTC to create a sign language dictionary on finance terms, because deaf people do not have that exposure to in a school or a college to get to know what finance is, what investment banking terms are, capital market. That exposure is not there. So creating a sign language based industry partnered, those are things which would come under empower. So having this is my first thing which I would say. Be bold, but use a method, but you have to progress. Second is, get to hiring, which is a lot of times preparedness, हम ready नहीं हैं. Take that step, get to hiring, because nothing is going to stop, and then definitely pay attention to career progression. And from a government perspective, I would say is, need to really, one is the law has created that kind of an impact, definitely, but the equal opportunity policy, to the extent of accountability of the policy,
accountability of understanding of providing reasonable accommodation. Infrastructure side, there is a little bit of quite a bit of movement, but from a hiring and practices, still some kind of I'm not saying taxing, but some kind of an account mechanism will help in, and also revisiting the incentive schemes. We had a TF scheme. I think it's not been well received, but need to see what have a consultation and see what kind of schemes can be launched from accelerating the demand for hiring more and more people with disabilities. Thank you very much, and I think great discussion, and thank you for your inputs. Just to end session को end करने के लिए एक thought process, क्योंकि इस agenda के लिए what is needed is allies. I think all of the panelists said that if we all can become allies, and somewhere at least I believe कि going back to scriptures and understanding that why we are doing this is very important. एक कबीर जी का दोहा है, with your permission I will leave that to end. हाँ, तो आप लोगों ने सुना भी होगा बहुत जगह पे, हाँ, कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, खजूर का पेड़ होता है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं और फल लगे अति दूर. So being a big corporate, doing everything, being a big employer, but if you don't do the right thing, अगर पंथी को भी छाया नहीं मिली तो उस पेड़ का क्या फायदा. I like to end my session there. Thank you. So much to all the speakers and to our moderator of this session. Indeed, a very big session we had. And here I would like to make a request to our Director DPWD, Hona Reddy sir, to kindly felicitate our speakers, Mr. Raja Sekharan, Ms. Richa Sahani, and Dr. Jitendra Agrawal. I also request Hona Reddy sir to kindly felicitate the moderator of the session, Mr. Amarpal Chadhaji. Thank you, sir. And with due permission of the chair, we request Ms. Richa Sahani ma'am to felicitate our respected secretary, sir. This is a painting made by hearing and speech. Thank you, sir. Thank you, ma'am. I now humbly request our respected secretary, DPWD, Shri Rajesh Agrawal ji, to kindly give away the concluding remarks for this conference. Let me summarize a little bit before opening the floor for some questions from my officer side also. I believe this has been a good sensitization workshop for all the officers of my ministry. Obviously, all of us realize that the kids have a lot of potential and abilities, and the Indian industry corporate sector is also, it has become willing. It might not be fully ready, but they have a lot of role models, other companies who have taken in persons with disabilities and are happy with the performance of employees. So that is important. So it's not charity work. Kids with disabilities have to prove themselves in the factories and the shop floors and then the companies or in the government organizations and be there on merit. So one should be very clear about it. But then obviously, as speaker after speaker has said, that the solid pipeline of well-trained, well-educated persons with disabilities is not there. The reasons are, first obviously the parents and the doctors, they need to be exposed to the fact, and to such role models, life can be like this.
Not everyone can become Rahul Gupta or Shubham or Ira. To the best of potential, we have to take the kids to those potentials. And the teachers, obviously, a lot of time kids with disabilities end up not in inclusive schools but in special schools also. So from RCI, I see Subodh and Vineet here. So we might have about 50,000 special educators in the system. So how many of them know कि बच्चे को या अपने 5% बच्चों को हमने ईरा या शुभम या ये बनाना है? Have they seen such successes in their lives? मैं जैसे कल अयोध्या में था, परसों लखनऊ में था, तो कई स्पेशल एजुकेटर से बात हो रही थी. आई एम श्योर नॉट मैनी ऑफ देम हैव बीन एक्सपोज टू देम. RCA से हमने एक स्पेशल कैंपेन लेना चाहिए कि टीचर्स, स्पेशल एजुकेटर्स एंड देन इंक्लूसिव एजुकेशन वाले, they get exposed to the fact that potential is there and the possibilities are limitless. then एक बहुत बड़ा प्रश्न आ जाता है क्लास 8 के बाद. क्लास 8 के बाद चॉइसेस का सब्जेक्ट नहीं मिलता, मटेरियल नहीं मिलता, ये बहुत ही बड़ा इशू है. कल भी मैं स्कूल में था तो मैं पूछ रहा था कितने बच्चे 10वीं पास हुए. कहते कोई ओपन स्कूल से हमने जी 2 बच्चे करा दिए पिछले 10 साल में 10वीं. किस सब्जेक्ट में कराया? वही बात कि मैथ्स और साइंस तो होता नहीं सर, आर्ट्स में कराया. और कॉलेज में तो ऑब्वियसली वो समस्या है. एंड इफ वी सी द ग्राफ इज प्रैक्टिकली लाइक दिस. खासकर ब्लाइंडनेस और डेफनेस में तो बच्चे 8वीं वगैरह कर लेते हैं, कुछ 10वीं कर लिया, उसके बाद क्या? कितने बच्चों ने 12वीं किया, कितनों ने ग्रेजुएशन किया? ग्राफ इज अनफॉर्चुनेटली लाइक दिस. लोकोमोटर में फॉर्चुनेटली लॉट ऑफ मैनेज टू गो टू द ग्रेजुएशन. कईयों को सब्जेक्ट नहीं मिलता एंड डेफिनेटली क्योंकि यू कांट ट्रैवल फार, the choices of colleges also get limited and the choices of subjects then obviously get limited. Or industry relevant skills, before this I was skill secretary for 1 year and that's unfortunately the refrain all around. Even अच्छे कॉलेजेस से बच्चे पास हो गए, इंडस्ट्री कहती है हमारे लायक नहीं है, हम तो फिर जीरो से ट्रेन करेंगे. बच्चे ने बीटेक कर लिया कंप्यूटर साइंस में या MCA कर लिया, इन्फोसिस से TCS वाला कहते हैं मैं तो जीरो से शुरू कराऊंगा, 6 महीने खुद की ट्रेनिंग दूंगा. Obviously with kids with disabilities this gap can be larger because the teachers have not exposed them to full potential, the library is not fully relevant for them. Maybe EPUBs आपको 10% किताबों के मिलेंगे, आप सेम सब्जेक्ट कर रहे हो, इक्वली शार्प हो, दूसरे बच्चे को पूरी लाइब्रेरी एक्सेसिबल होगी, ब्लाइंड बच्चे को 5% बुक्स EPUB में मिलेंगी या कुछ भी है. तो हमारी जो स्कीम्स हैं RCA का मैंने बात किया, TDRS वगैरह में जॉइंट सेक्रेटरी इधर हैं, होना है, हमारे डायरेक्टर नए आए हैं. तो ऑब्वियसली यू हैव हर्ड लॉट ऑफ पीपल, so we need to sort of reimagine our schemes. Accessible India का भी घर से स्कूल या कॉलेज तक या घर से वर्क प्लेस तक. Is it a comfortable journey? There are so many factors. आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट लगेगा, पहले अपनी अपार्टमेंट में ही आपका दिक्कत आ जाएगी, फुटपाथ पे दिक्कत आ सकती है, बस में चढ़ने में दिक्कत आ सकती है, ट्रेन में आ सकती है, टैक्सीज कितनी मिलती हैं, उबर वगैरह. उबर एप्लीकेशन ही ब्लाइंड फ्रेंडली है कि नहीं, बड़ा दिक्कत वाले काम है सारे. देन एडिप स्कीम हमने एक कंफर्टेबल लिविंग के हिसाब से तो बनाया है. ठीक है, ब्लाइंड है तो स्मार्ट कैन दे रहे हैं और चीज़ें दे रहे हैं, बट नौकरी के लायक के लिए क्या क्या चाहिए एडिप में? आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप भी हमें सजेशंस दीजिए कि हम एडिप स्कीम में ऐसी और चीज़ें डालें विच मेक अवर किड्स रीच हायर एजुकेशन एंड रीच द जॉब लेवल पोटेंशियल. उसमें क्या क्या ऐड किया जाए? जैसे हमारी ब्रेल प्रेस स्कीम में पहली से 12वीं की हम किताबें देते थे, हायर एजुकेशन नहीं था उसमें, कंप्यूटर साइंस भी नहीं था. कंप्यूटर सब्जेक्ट तो ब्लाइंड किड्स नाउ actually they know how to use iPhone much better than me because for them it is lifeline.
For us, it is one of the gadgets. हम अपने गली में एक स्कूल में था जिसमें डेफ बच्चे काफ़ी थे और कोई 5वीं था, कोई 8वीं में था. आई वॉज हैप्पी टू सी. मैंने एक्चुअली साइन लैंग्वेज के टेस्ट टाइप भी लिया. अपने मैं मोबाइल में 1-2 लाइनें लिखता था, फिर उनके इंटरप्रेटर को बोलता था, इनसे कोई बच्चों को बोलता था किसको इनेक्ट करके बता. सो आई वॉज हैप्पी दे न्यू दिस. फिर मैंने एक बच्चे को पूछा मोबाइल है, ही सेड यस. मतलब उसने अपना मोबाइल निकाला. मैंने कहा अपने टीचर को वीडियो कॉल कर. चाइल्ड वाज स्ट्रगलिंग. So this is a life skill we are not teaching, though we are teaching sign language. हमारे ISL के मैं फैकल्टी को देख रहा हूँ, संजय को देख रहा हूँ. अपने ISL कोर्स में अपने को डेफ बच्चे को अगर सिर्फ साइन लैंग्वेज के अलावा बहुत कुछ सिखाना है, लाइफ स्किल सिखाने हैं. ब्लाइंड बच्चों को हम मोबाइल दे रहे हैं पर उस पर ट्रेनिंग नहीं दे रहे. अगर बच्चा 9th से ऊपर में आ जाता है, उसमें अच्छी अच्छी ऐप्स नहीं डाल के दे रहे विच आर जॉब फ्रेंडली इन ए सेंस, कि जो उसके लिए ट्रेन करें. तो ऑब्वियसली सिप्डा का आप सबने कहा एंड स्किल्स बहुत रेलेवेंट होने चाहिए, सिखाने का तरीका अलग होना चाहिए. We have initiated something and I am happy a lot of people who are acting as a bridge between the kids and the companies, they are here. So purely on consent basis of the child, जो data sharing वाला है, my team has initially talks with 2-3 of such organizations. So we would like to create a network of such organizations कि बच्चों तक भी पहुँचे सिस्टम के थ्रू कि ये इस तरह की जॉब्स हैं, आप इस तरह की ट्रेनिंग कर लोगे तो यहाँ पे जॉब मिल जाएगी. एंड कंपनीज को भी एक पाइपलाइन दिखे कि इस तरह के बच्चे हैं. अगर फुली ट्रेंड भी नहीं है तो कंपनीज ट्रेन कर देती हैं. मैनी कंपनीज आर नाउ शोइंग दैट काइंड ऑफ एम्पैथी. अब बच्चों को ले आओ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ, तो अपने काम के लायक हम बना लेंगे. फाइनली मिनिस्टर साहब कुड नॉट मेक इट टू दिस प्रोग्राम. उनको दिल्ली से बाहर काम आ गया था. बट ही हैज स्पेशली टोल्ड मी, मैंने भी कहा सर इस बार हम बोलेंगे कम, अधिकारी लोग सुनेंगे ज़्यादा. तो सर मुझे अच्छे से ब्रीफ करना कि क्या क्या आइडियाज़ आए. वेरी हैप्पी कि आज हमारे पूरा इधर से कर्म योगी बच्चे हैं, फिर इरा है, फिर माई हैट्स ऑफ टू ऑल द पैनलिस्ट्स दैट यू हैव डन ए ग्रेट जॉब. नूपुर ने, मधु ने, अमनदीप ने, सब ने बहुत सॉलिडली आइडियाज़ बाहर निकाले और सबको चांस दिया. So for me it has been very educative session. I am sure for our officers also it has been an educative session. I am very glad that Major General Sahab, he went out and then he शब्द के पक्के होते हैं, वापिस आ गए हमारे बीच. So we are thankful. So now for about 10 minutes I can open floor to my officers especially कि आपने और कुछ पूछना है, and to anyone else who might have any suggestions or anything. Yes, Subodh. नमस्कार सबको. मेरा नाम सुबोध है, मैं RCA में हूँ. सर एक्चुअली हमने सारे स्पीकर को सुना अच्छी तरीके से, और खासकर अभिषेक गुप्ता जी को भी सुना हमने, अभिषेक सिंह जी को, राहुल गुप्ता को, और ये अशोका यूनिवर्सिटी से मैडम आई. सॉरी सुबोध, एक बार मैं बात भूलना चाहूँ. मैं इरा को 26 जनवरी को प्रेसिडेंट हाउस में मिला. जी सर. तो इरा ने एक बहुत बढ़िया बात बोली. हाँ सर, आप जॉब मैपिंग कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब्स की, 3400-3500 का कर लिया, पर आपका तरीका गलत है. इवन कॉर्पोरेट सेक्टर का भी. जी सर, आप कहते हो कि इस जॉब के लिए हम ये वाली डिसेबिलिटी टॉलरेट कर लेंगे, ये क्या तरीका हुआ? आप जॉब के लिए एबिलिटीज डिफाइन करो, हमें बोलो, हम बाकी बच्चों के साथ पार्टिसिपेट करेंगे, हम भी एबल हुए, हमें भी नौकरी दो. बिल्कुल सही. I just wanted to say that कि इरा told me this. तो सर जो हमने जो पाया, जो इस स्पीकर ने बहुत अच्छा ये बहुत सारी बातें कही, खासकर कैसे एक्सेसिबिलिटी किया जाए, और मोस्टली जो चीज़ें खुलकर सामने आई हैं, और सभी ने यही कहा जो सेंसिटाइजेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ख़ासकर ट्रेनिंग अवेयरनेस प्रोग्राम की. अशोका यूनिवर्सिटी से जो मैडम आई, उन्होंने भी कहा, जो उन्होंने लर्निंग सपोर्ट सिस्टम में उन्होंने अपने साथ काम किया है. मैडम, हम भी जानना चाहते हैं ये जो सपोर्ट जो आप सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम करना चाहती हैं या जो कर रही हैं अपने टीचर्स के लिए, हायर एजुकेशन फैकल्टीज़ के लिए, उसका ड्यूरेशन क्या होता है और कंटेंट क्या होता है, नंबर 1. अभी साहब ने कहा, जैसे कि अर्नेस्ट यंग साहब, उन्होंने कहा जो कॉर्पोरेटर के लिए भी सेंसिटाइजेशन की आवश्यकता होती है, तो किस प्रकार की आपको कंटेंट चाहिए, क्या चाहिए,
RCA बीइंग ए रेगुलेटरी बॉडी इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी सेक्टर, हमारे पास सारे मटेरियल उपलब्ध है। हमने इस पर बहुत काम किया, हमारे ऑफिसर्स ने, हमारे डिपार्टमेंट ने बहुत काम किया है, जॉइंट सेक्रेटरी ने बहुत काम किया है। मेरे पास सारे मटेरियल इन सर्विस ट्रेनिंग सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम के लिए हमने तो उसे डिफरेंट लेवल पे ही बनाया है। ग्रास रूट लेवल का अलग बनाया है, एजुकेशनल फंक्शनरीज का अलग बनाया है, लॉयर्स के लिए अलग बनाया है, जुडिशल सर्विस के अलग बनाई है, डॉक्टर्स के लिए अलग बनाया है, सीनियर गवर्नमेंट फंक्शनरीज की भी अलग से बनाई हुई है, और ये हमारे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। हम चाह रहे हैं जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो हमें करें। अब मैं क्षमा चाहूँगा सर, चूँकि अभी हमें इस तरह की बात आ रही है। अभी किसी मैडम ने कहा जो किसी सर ने कहा जो टीचर्स को भी अवार्ड मिलना चाहिए, चूँकि वो पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ काम करते हैं, उनको भी नेशनल अवार्ड देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, लेकिन साथ में सेंसिटाइजेशन की बात भी कही टीचर्स की। अभी बहुत से हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं जो हमारे साथ आरसी के साथ काम करते हैं, वो भी एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम स्कूल टीचर्स के लिए करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, स्कूल टीचर गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं करती है, उनके पास फंडिंग का इशू होता है। सर ये आगे फंड कहाँ से लाए? हमारे पास भी कहीं ना कहीं फंड का क्रंच होता है, हम भी। लेकिन क्या इस मामले में क्या कॉर्पोरेट सेक्टर इस मामले में सपोर्ट कर सकती है? हम इस तरह हमारे पास मटेरियल है, आप बताइए हमें क्या करना है, किस यूनिवर्सिटी में जाना है, रेडीमेड मटेरियल है, रिसोर्स पर्सन है, कंटेंट्स हैं, एवरीथिंग वी हैव डेवलप्ड। आप बताइए क्या करना है, हम तैयार हैं करने के लिए। एक बहुत बड़ी चीज़ है आपने बताई है। दूसरी बात, एक बहुत ये बातें खुलकर आई हैं सामने, इन्होंने कहा जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ की बात कही है। जैसे कि सर ने कहा जो पार्शली होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, पिक एंड चूज़ की बात होनी चाहिए। आपने विजुअली इम्पेयर्ड की बात कही है, हियरिंग इम्पेयर्ड की बात कही है, लोकोमोटर की बात कही है, ASD की बात कही है। कभी किसी ने ID बच्चों के बारे में, उनके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में किसी ने चर्चा नहीं किया। ये क्यों? उसके लिए क्या एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव्स नहीं हो सकते हैं? उनके लिए क्या हमारा सोशल जस्टिस, हमारा डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है? हम तो उसके एम्पावरमेंट की बात करते हैं। इसके बारे में भी मैं ऑनेस्ट यंग से जानना चाहूँगा। और आप लोग जो सिंस यू आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट सेक्टर, एक बहुत बड़ी CSR के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, जो क्या कर सकते हैं ID सेक्टर, खासकर ID बच्चों के लिए, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए। क्योंकि उन्हें तो मुसीबत ये होती है, उनका एजुकेशन ट्रेनिंग की बात, अगर हम उसे कहें 8वीं पास करना है तो उन्हें बहुत दूर दूर भटकना पड़ता है, कभी NIOS के पास जाना पड़ता है। अब रिसेंटली एक, जैसे कि अभी सर से ये बात हो रही थी, जो हमारे स्पेशल स्कूल हैं वो खासकर गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज भी नहीं है। आखिर वो बच्चे एग्जाम कैसे पास करते हैं, उसके बारे में भी हमें सोचना है। एक ओपन बोर्ड की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं सर, इस पर भी सोचना है। साथ में हम ये भी कहना चाहेंगे सर, रिसेंटली जो सेंसिटाइजेशन की बात कही है, जो अगर हम देखें तो बच्चे को माँ बाप के और माँ पिताजी के बाद सबसे बड़ा ट्रेनिंग देते हैं स्कूल सिस्टम में। स्कूल सिस्टम में इन सर्विस टीचर्स की बात आती है, उनको सेंसिटाइजेशन की। इसके अलावा अभी रिसेंटली हमने सर, एक्चुअली एक सर के साथ शेयर करना चाहूँगा, अभी AICT के साथ मीटिंग हुई है। जैसे आपने कहा AICT के किसी साहब ने कहा जो उनका ऑडिटोरियम एक्सेसिबल नहीं है, बहुत सारे उसमें डिफॉल्ट्स या डिमेट्स उसमें पाई गई है, आई डोंट नो। लेकिन सर मैं वहाँ जाता हूँ, मैं देखता हूँ, और हमारे AICT के साथ में मीटिंग कई बार हो चुकी है। हम उनके साथ एक 40 आवर्स का एक प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं, एक MOU साइन करने के लिए जा रहे हैं। और वो MOU जो होगा, जो बेसिकली ये इट इज़ अ सेंसिटाइजेशन टुवार्ड्स द PWDs है। ये 40 आवर्स का कंटेंट्स ऑल द मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स हैं उनके, और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स उनके कंटेंट्स में एज ए पार्ट ऑफ इंटर्नशिप प्रोग्राम करके चलाया जाएगा। दैट वी आर ऑलरेडी वर्किंग, और हम उसके साथ में इसको हम इम्प्लीमेंट करने के लिए जा रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सर, सिंस एक्चुअली यू हैव गिवन मी अपॉर्चुनिटी, सो आई मस्ट दिस वाज द फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन विथ ऑल ऑफ यू। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। Anyone? Rajiv, Vineet, Mona, NHFDC, Limco. Sir, with your permission, just I would like to understand. I am in this sector only a year old, so I just want to understand. We got independence in 47. Now so many years have gone. Our officers must have visited in 70 years across the world. So somebody made a comment that 38 countries situation is not that bad as far as accessibility is concerned as it is in India. So why we lacked? Was it the shortfall of money in early 60s, 70s? Why we lacked in growth? We had our act also in 1995. Why not in 60s or 70s? Was it the lack of sensitization even at the higher levels also? Or why we are lacking so much when those so many countries have gone ahead? Any one of you can respond. नहीं, एक्चुअली इसमें दोष किसी का नहीं है, दोष हम सबका ही है ना। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे हम लोग
सरकार में जब रहते तो पॉलिसीज बना लेते बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती। आप 90s को छोड़िए, 2016 में जब बना था कैंपेन और अब आप 23 में 7 सालों की जर्नी को देखें तो क्या कहाँ तक चले गए आप लोग। तो वो जो है ना, जो इम्प्लीमेंटेशन का एग्जीक्यूशन का चैलेंज है वो हमें उस पर ओवरकम करना है। पॉलिसी बनी हुई है, स्ट्रक्चर बना हुआ है कि कैसे एक्सेसिबल ऑडिटर को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसको कैसे किया जाएगा, सब सरकारी बिल्डिंगों को एक्सेसिबल, बट वो ये कि उसको फेज तरीके से इम्प्लीमेंट करना है और उसको ओवरकम करना है। जैसे सेक्रेटरी साहब ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बताया है ना, पाथवे का बताया, बिल्डिंग्स का बताया, तो वो सब चीज़ें लिखी हुई है। आप खुद आपके डिपार्टमेंट में देखें कि सारी पॉलिसी बनी हुई है, बट वो इम्प्लीमेंट कितने लेवल पे हुई, कितनी हमने उन स्टेट गवर्नमेंट से फॉलो अप किया, कितना कैसे जल्दी से किया, क्या हम लोग और उसको इनोवेटिव बना सकते हैं। आई थिंक एक एक्सेसिबल ऐप भी है, आप देखेंगे कि उसमें कोई भी बंदा अगर एक बिल्डिंग को देखता है इनएक्सेसिबल, वो फोटो डाल देगा, तो आप देखेंगे उसमें लाखों बिल्डिंग्स के अभी सैंपल हैं उस ऐप में, एक्सेसिबल ऐप में। तो आप कितने सारी हम इनोवेटिव चीज़ बना सकते हैं जिससे हम बट वो अंदर से चाहत, नियत और वो इम्प्लीमेंटेशन की वो है, और कोई चैलेंज नहीं। आई थिंक हम सब कर सकते हैं, सब कैपेबल हैं हम सब लोग। यहाँ पे उद्योग जगत के बहुत सारे प्रतिनिधि मौजूद हैं। मेरी एक मासूम सी जिज्ञासा है, वो कुछ इस प्रकार से है कि गवर्नमेंट की तुलना में हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, जो उद्योग जगत है, वो रूल्स के मामले में थोड़ा सा लचीला होता है। अब यहाँ ये कहने के बाद मैं बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट में भी ये चिंतन चल रहा है कि हम अपनी भूमिका को रूल बेस से हटके रोल बेस पे लाएं। इस बैकग्राउंड के बाद में मेरा प्रश्न ये है कि ये प्रश्न मैं एक विशेष संदर्भ में पूछ रहा हूँ। वो संदर्भ है कि मेरे को जिम्मेदारी दी गई है कि करीब देश भर में 300-400 एनजीओज हैं जो कि डीडीआरएस स्कीम के लाभार्थी हैं और विभिन्न डिसेबिलिटीज से ग्रस्त बच्चों को वो लाभ पहुंचाते हैं। अब ये सब स्पेशल स्कूल है। इस स्पेशल स्कूल के बच्चे जरूरी नहीं कि वहाँ से ये स्पेशल स्कूल है, गवर्नमेंट उनको 18 साल की एज तक सपोर्ट करती है। कुछ खास डिसेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में हम 23 साल तक जाते हैं, 23 तक। अब वहाँ से बच्चे निकल गए उस स्कूल से, जरूरी नहीं कि उनके पास कोई 10th या 12th का कोई सर्टिफिकेट ही हो, जरूरी नहीं, उनके पास हो भी सकता है। ये बच्चे ऐसे में नहीं हैं कि जिनके पास जो यहाँ से निकल के किसी कॉलेज में जाएंगे। तो ऐसे में क्या ऐसा संभव है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कुछ ऐसे फोकल पॉइंट्स बन जाएं जो कि हमारे शुरुआत में चुने हुए डीडीआरएस से इंटरेक्ट करें, बाद में इंटरेक्शन और भी ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो जाए और हम ऐसी स्किल्स आइडेंटिफाई कर पाएँ जिनको हम बता पाएँ डीडीआरएस एनजीओज को, जो एनजीओज डीडीआरएस स्कीम को रन कर रहे हैं, क्या अपने बच्चों को जो कुछ पढ़ा रहे हैं उसके साथ में स्किल एक्स या स्किल वाई भी इम्पार्ट करने की कोशिश करें, सो दैट आपके यहाँ जो एक साल में 30-40 हज़ार बच्चों को जो गवर्नमेंट अपने ग्रांट से सपोर्ट कर रही है, उसका अगर 10% भी कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में प्लेस हो जाए, क्योंकि उसके पास 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट भी नहीं है और पार्टिकुलर ग्रेड्स भी नहीं है, लेकिन उसके पास वो स्किल है। तो यानी कि मैं ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि आप लोगों के सुझाव के अनुकूल हम लोग अपने डीडीआरएस स्कीम में हम लोग मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, सो दैट जिस पर्पज से हम ग्रांट दे रहे हैं डीडीआरएस के एनजीओ को, उसमें हम एक एडिशन कर दें कि साहब वो बाकी सारे काम करने के अलावा वो एक पर्टिकुलर स्किल सेट भी इम्पार्ट करेगा। तो मुझे फिर उस स्कीम की जो है जो उपयोगिता है वो ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये मेरा क्वेश्चन करेक्टली आप सभी को है। तो मैं अगर इफ आई कैन रिस्पॉन्ड, हाँ, और इसमें मैं चाहूँगा कि आप में से एक नहीं, आप में से अनेक लोग रेस्पॉन्ड करें। प्लीज़ आप बोलिए। तो यूएस में कई जैसे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, उनके लिए प्रेप स्कूल्स होते हैं जिसमें बच्चे जाते हैं 9th स्टैंडर्ड में और टिल 12th स्टैंडर्ड दे प्रिपेयर टू गो टू कॉलेज, ताकि दे कैन गो टू द बेस्ट कॉलेजेस इन द कंट्री। हम लोग के जो सिस्टम है स्पेशल स्कूल्स की, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि दे नॉट ओनली डिसेबल्ड बाय एबिलिटी बट दे आर डिसेबल्ड बाय अपॉर्चुनिटी। इंस्टेड ऑफ इंसेंटिवाइजिंग एंड सेइंग कि ये बच्चे शायद 10th नहीं कर पाएंगे, 12th नहीं कर पाएंगे, एंड उनके लिए क्या करें, कैन वी सेट टारगेट्स कि आपके स्कूल में से एक्स नंबर ऑफ बच्चों को इन नॉन और हायर एजुकेशन में एनरोल करना ही है, और उनको कैसे एनरोल कराएं, ट्यूटरिंग एक्स्ट्रा दें, आप उनको कोचिंग दे दें, कैसे टाई अप करें। देयर आर इनफ पीपल एंड मोर हु कैन हेल्प। हम लोग बार इतना लो सेट करते हैं कि वो बेचारा, दुनिया की रीत है ना कि आप इधर करोगे तो इधर पहुंचोगे, हम लोग हैं ही इधर, तो आप पहुंचोगे कहाँ। तो
कैन वी फ्लिप इट एंड इंसेंटिवाइज कि आपको बच्चों को कॉलेज भेजना है, उसके लिए क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो आप करिए, क्योंकि आपकी मेजॉरिटी बच्चे तो जा सकते हैं, इट्स द माइनॉरिटी दैट इज़ नॉट गोइंग। एंड उसके लिए आपके पास ओपन स्कूल्स हैं, ओपन बोर्ड्स हैं, है ना, स्किलिंग का है, वो सब आप कर सकते हैं। बट हाउ आर यू फिलिंग दैट पाइप जो ये लोग कह रहे हैं, बिकॉज मोस्ट किड्स कैन डू इट, बट दे आर, यू आर नॉट एनेबलिंग इट। जैसे सर ने कहा, साइंस की टेक्स्ट बुक्स ही नहीं है ब्रेल में, आप मैथ्स पढ़ाओगे कैसे? बच्चे के पास अक्ल है बट बच्चा मैथ्स नहीं पढ़ पा रहा। तो कैन वी इंसेंटिवाइज दैट इन द स्कीम? दैट वुड बी माय रिकमेंडेशन। उसमें राजीव जी, जैसे मधु हमारे साथ है, वो एनएबी से है, आप हिंदुस्तान का ही मॉडल ले लीजिए। तो एनएबी स्कूल नहीं है, एनएबी प्रिपरेटरी स्कूल है, और बच्चे को डीपीएस में भेजता है और बड़े टैगोर इंटरनेशनल में भेजता है। वो उसको लेकिन सुबह शाम सिखाता है और शाम को कोचिंग भी करवाता है, ताकि वो नॉन दिव्यांग बच्चों के साथ टक्कर ले सके। जब मैं स्कूल में जाती थी तो मेरा कम से कम 13 घंटे लंबा दिन होता था। मेरे पेरेंट्स दिल्ली में दिल्ली में रहती थी, तो हॉस्टल में नहीं रहती थी। पहले दिल्ली पब्लिक स्कूल आर के पुरम में मैं पढ़ने जाती थी, पूरा स्कूल का टाइम वहाँ बिता कर उसके बाद एनएबी जाना। वहाँ पर कॉन्सेप्ट्स लाइक जियोमेट्री, जियोग्राफी, एक या हमारे बॉडी पार्ट साइंस कैसे दिखते हैं, मेरे एक लिवर कैसा दिखता है, किडनीज कैसी दिखती हैं, वो सब हमें सिखाया जाता है। तो ऐसा कुछ मॉडल सर ने बिल्कुल सही कहा, अगर हम करें तो उससे हम काफ़ी हद तक बच्चों को एनेबल कर सकते हैं, पढ़ने के लिए एक जागरूकता ला सकते हैं। जब जागरूक होंगे, अवेयर होंगे, वो इच्छा शक्ति फिर पढ़ने की प्रबल होगी। और इसके साथ साथ हायर एजुकेशन में भी अवेयरनेस की ज़रूरत है। मैं अपना एग्जांपल दूं, मैं एमबीए करना चाहती थी कुछ 1-2 साल पहले किसी एक इंस्टीट्यूट से, एग्जीक्यूटिव एमबीए। अब मैंने डिग्रीज, पेपर सब कुछ जमा कर दिए, लेकिन उसके बाद अब समस्या आ गई कि आप अपनी असाइनमेंट्स कैसे सबमिट करेंगी। हमारा एक प्लेटफॉर्म है, वो एक्सेसिबल है नहीं है। मैंने यहाँ तक ऑफर किया कि मैं आपको हेल्प करूँगी, देखूँगी कि इसको कैसे एक्सेसिबल बनाना है, आप मुझे एंट्री तो दीजिए। लेकिन वो अपने में ही सॉल्व करते रहे पजल को, कि मुझे उसमें एजुकेशन में एडमिशन नहीं मिली और फिर मेरी इच्छा मर गई वो करने की, मैं आगे बढ़ गई। तो ऐसे जगहों पे भी मतलब हम थोड़ा सेंसिटाइजेशन और एक्सेसिबिलिटी ला सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर तो उन सकते स्पेशल स्कूल को आप इसी तर्ज पे तैयार कीजिए। दूसरा, अभी सीएसआर का बहुत सारा पैसा है जो लोग तैयार हैं ऐसे सिस्टम में डालने के लिए, बहुत सारे लोग हैं। कितने सारे अब स्कॉलरशिप, रिलायंस फाउंडेशन, हजारों स्कॉलरशिप्स हैं, उनको बच्चे नहीं मिलते कि किसको पैसा दें। तो आपके तो अगर ये डीडीआरसी में 500 हैं तो बहुत बड़ा अच्छा मॉडल, एक बड़ा प्रपोजल बना के उनको शेयर किया जा सकता है। और ये जो एनएबी वाला मॉडल है, ऐसे मॉडल्स को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि वो बच्चे जो है निकलने के बाद तलाश ना करें, वो तो स्किल्ड रहें और उनको नौकरी, मतलब एम्प्लॉयबिलिटी इंश्योर हो जाए उन लोग। मेरा सर एक छोटा सा अग्रवाल साहब से अपना ही है सर। जैसे कि आपने कहा 2015 से हम लोग का नेशनल एक्शन प्लान डिपार्टमेंट ने शुरू किया सब्जेक्ट के अंदर, उससे बहुत कुछ बहुत अधिक जैसे साहब ने कहा, अभी हम लोग जो स्किल का जो डाटा है, ट्रेंड, उसका हम लोग यूथ फॉर जॉब इत्यादि से हम लोग शेयर कर रहे हैं ताकि प्लेसमेंट में अपना ये। लेकिन मेन चैलेंज है कि हम लोगों को बेहतर ट्रेनिंग पार्टनर नहीं मिल रहे हैं। तो आपने देखा कि ट्रेनिंग पार्टनर क्यों नहीं आए जो इस सेक्टर के मेन प्लेयर्स हैं, राजा जी या उधर। इसलिए मैं सबसे आग्रह करता हूं कि अगर इस तरह के हमारे पास अगर प्रपोजल्स आए और ये करके आप प्रयास है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा हम लोग आप उसका खुद इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि जो रियल प्लेयर्स हैं वो नहीं है आपके पास। वो ऐसे प्लेयर हैं जो कि डिसेबिलिटी को नहीं जानते। आप देखिए 1 लाख में से कितने लोगों की नौकरी लगी? आपने जो 1 लाख लोगों को ट्रेन किया एनडीपी में, कितने लोगों की नौकरी लगी? नहीं, हमको बहुत इसमें 70% पैसा लेके भाग जाते हैं आपका। थोड़ा सा सर आपसे, आप लोगों से आग्रह अगर इसमें है कि अच्छे जो है ना ट्रेनिंग पार्टनर अगर देखिए, उसको आपको ये देखना पड़ेगा कि वो यूजर फ्रेंडली हो। राजा जी चेन्नई से चल के आए और आपका अप्लाई कर दें, या फिर उधर से जो है विनीत आए वो अप्लाई कर दे। तो आप ये देखिए कि जो यूजर फ्रेंडली हो और उनको लाइन में ना लगना पड़े, है ना। देखिए हम लोग अपना ही कर रहे हैं, हम लोग काफ़ी मतलब इसको, जैसे रीजनेबल कन्वर्सन की बात चल रही है, हम लोग काफ़ी प्रोसेस को हम लोग अपना ही कर रहे हैं। और हम
विभाग की तरफ से सचिव महोदय की तरफ से हम आश्वासन देते हैं, प्रपोजल्स अगर बढ़िया अगर आते हैं अप्लाई करके, तो हम लोगों को मतलब यह जो लाइन वाली बात है सर, ये हम लोग नहीं होने देंगे। अब देखिए पेपर आपके स्कीम में कितना पेपर वर्क है, मैं तो पूछता हूँ आपके डिपार्टमेंट से कि कहाँ रखते हो इतने पेपर बोरियों में भर के आप नहीं उसको। सर, इसको हम लोग मतलब रिवाइज करने जा रहे हैं। हाँ मतलब आई एम श्योर कि अभी इस जमाने में इंदर जी ने सही क्वेश्चन पूछा है। कागज बहुत इकट्ठा करते थे, अभी ट्रकों के ट्रक निकाले हैं। हाँ मैं तो पूछा सर, मैंने कहा कहाँ रखते होगे यार तुम इतने ट्रक का। नहीं, अभी सर हम लोग इसको पीएम दक्ष पे हम लोग करने जा रहे हैं, ऑनलाइन सब पूरा सिस्टम हो जाएगा अपना ही करने का। थोड़ा सा अपने के अच्छे मतलब पार्टनर आए डिपार्टमेंट के साथ अपना ही। तो जी ठीक है, अपन ने जितेंद्र जी से भी और सजेशन लेंगे, बाकी लोगों से भी। गाइडलाइंस में भी काफी चेंज करना पड़ेगा, तभी ये अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करेंगे रिजेक्ट हो जाएंगे। तो पहले अपनी गाइडलाइंस चेंज करें। तो आज का मकसद ही ये था कि हम कुछ अच्छे लोगों के साथ बैठे हैं जिन्होंने अचीव किया है, जो नौकरियां दिला रहे हैं और जो नौकरियां दे रहे हैं। तीनों ग्रुप आ गए। जो बच्चों में पोटेंशियल है, इच्छा शक्ति थी, इच्छा शक्ति के और एबिलिटी के बल पे आगे बढ़े, रोल मॉडल बने देश के लिए। बस यंग बच्चे हैं जो कर्मयोगी बने हैं, सरकारी नौकरियों में आए हैं। ईरा अब थोड़ी पुरानी हो गई। Now she has to take over the mentorship role. एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, एक जो जो एलिमेंट कई बार मिसिंग होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको खुद को एम्पावर करना कि वो अपने अपने लिए एडवोकेट कर पाएँ। वो जो सेल्फ एडवोकेसी वाला जो कॉन्सेप्ट है, दैट हैज़ टू बी बिल्ट फ्रॉम द स्कूल लेवल। अभी जैसे उन्होंने पूछा कि अवेयरनेस सेंसिटाइजेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं। फैकल्टी है, स्टाफ है, स्टूडेंट बॉडी है। इसमें हम अगर अवेयरनेस सेंसिटाइजेशन सेशन करते हैं तो हम स्टूडेंट्स जिनको डिसेबिलिटीज़ हैं उनको साथ लेके चलते हैं। तो अगर सपोज एक कंप्यूटर साइंस का प्रोफेसर बोलता है कि अरे रीना, इसको ये मैं कैसे करूँगा, मैंने कभी पढ़ाया नहीं है कंप्यूटर साइंस एक 100% ब्लाइंड स्टूडेंट को, तो मैं कैसे बोलूँगा, मैं कैसे करूँगा, इसको तो ये नहीं आता होगा, इसको तो वो नहीं आता होगा। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि सर आप एक बार इस स्टूडेंट से मिल लीजिए। I just take that student and I have to be absolutely quiet. You have to see the conversation between the faculty and the student. Within 5 minutes, the professor says, "Most welcome to my course. You already know much more than I, expect from this class to know." Because ये students इनकी like सुहाना said, perseverance ही अलग level की होती है। जो इन्होंने क्लास 12th तक इन्होंने सीखा है, of course इनकी मेहनत है वो 10 एटलीस्ट 10 times more है बाकी स्टूडेंट्स से। So when they enter any higher education institution or even an industry, their skill levels is at another level. One has to really understand कि ये एक अलग मेहनत करने वाले लोग हैं। इनको आपने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म देना है, दैट्स दी ओनली थिंग। और ये सेल्फ एडवोकेसी का जो कॉन्सेप्ट है, जब तक स्टूडेंट अपने आप से उसको आप एम्पावर नहीं करोगे कि अपने बारे में बोलो, चाहे आप स्कूल से कॉलेज जा रहे हो या कॉलेज से आप इंडस्ट्री में जा रहे हो, द मोमेंट दे अंडरस्टैंड कि अगर मैं मांगूंगा, अगर मैं बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे मिल जाएगा। अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं देंगे तो वो आगे नहीं कोई कहीं जा पाएगा। तो स्टूडेंट्स हैव टू बी एम्पावर्ड इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू से, एंड दैट आई फील हैज़ ऑलवेज वर्क। Any more question from our side? So as a parent, I'll say something. From scratch level, जब बच्चा स्कूल जाता है, जब बच्चे को कोई भी डिसेबिलिटी होती है, मेरी बेटी को डिस्लेक्सिया है, सुहाना इज माई डॉटर, दैट मिनट द टीचर स्टार्ट्स लेबलिंग माई बच्चा, उसी समय बच्चे पे वो एक स्टैम्प हो जाता है कि ये नहीं कर पाएगा। दैट ये नहीं कर पाएगा शुड गो अवे। Every teacher at B.Ed level should be taught to sensitize. It should be not कि एक special educator चाहिए. According to me, every teacher should be a special educator. When you said about funds, how will we have funds? That's how you can have that every every teacher should be a special educator. Every principal should be a special educator. And only then the changes will happen. If the primary and the school level will not change, like they're saying, the industry says they are not ready. Why are they not ready? We blame the schools, according to me. My child, we were very lucky. We went to an inclusive school. Uske bawajood, we had so much problems. My daughter has gone into a very good medical college, but she is fighting till now.
it's the fight is every level we are fighting. In standard 11 she said I want science. The school said no, we don't think you can do it. अपनी life आसान बनाओ. नहीं बनानी है आसान हमें अपनी life, हमें अपने dreams को pursue करना है. Why is it that we are labeled at every level? So that labeling needs to go away, and at every level it needs to go away. Be it at industry level, work level, college level, school level, every level this labeling needs to go away. Like Reena ma'am said, it's not a disability. My daughter always says one line about herself, that somebody once said that you have a disability. She said, no, I don't have a disability. I have two very beautiful disabilities. One is a muscle defect, which is dimples, which she has, and one is dyslexia. So ये एक नजरिए का अंतर है बस. So it's high time that we need to change this नजरिया. 6 बज गए हैं और राजेश जी अभी तक बैठे हैं, उनके लिए हम फिर से एक ताली बजा सकते हैं। अभी तक बैठा रहूंगा पर सभी को घर जाना है। अच्छा है सर, सारा ट्रैफिक क्लियर हो जाएगा। के साथ अब हमारा नम्र निवेदन सचिव महोदय जी से कि वे कृपया मेजर जनरल शरद कपूर जी को फेलिसिटेट करें। सर प्लीज। शॉल सारी गायब कर दी। मैंने सिर्फ मुझे देने को मना किया था, बाकियों को देने को थोड़ी। थैंक यू। धन्यवाद सर। मेरा नम्र निवेदन डेप्यूटी सेक्रेटरी महतो सर से कि वे कृपया संयुक्त सचिव राजीव शर्मा जी को फेलिसिटेट करें। साथ ही सर से निवेदन कि वे KR वैदीश्वरन सर को भी फेलिसिटेट करें। एडमिशन कोऑर्डिनेटर जितेंद्र जी की अपनी अलग स्टाइल है, वो सीधा बोलता नहीं सकते कि सब जल्दी खत्म करो। नहीं बोल रहे, सब 6 बज के ताली बजाओ। आपके ऊपर आ गई बात। नहीं एक्शन करने की जरूरत है सर, हमें एक्शन करना है सर, एक्शन। आप सभी डेलीगेट्स का विश्व सामाजिक न्याय दिवस पर आयोजित इस कॉन्क्लेव में पार्टिसिपेट करने के लिए एक बार पुनः हृदय से आभार। और we may all may proceed now for the high tea which is served in the foyer area on the second floor. ग्राउंड फ्लोर पे है ना? नहीं सर, सेम फ्लोर। सेम फ्लोर। इसी फ्लोर पे, इसी फ्लोर। अच्छा वो अच्छा। सब तरह का प्रोग्राम। मेरा तो असल बैटरी भी खत्म हो गई। अब मैं सोचता हूँ कि तो खत्म हो गया। ओके, कैमरों की